सीधा केस स्टडी क्वेरी से स्टार्ट करें। केस स्टडी करना पड़ेगा, शॉर्ट में करना है। 3 सब्जेक्ट है। Can we start now? Yes sir, yes. करिए। So, हाँ। hello, कौन कर? yes. So our first case study is on private trust, the art of trust-based plan. So how do you all want to get this started? I mean, do you need any background on trust, taxation aspects, specific trust decision, taxation aspects here, or we just jump into the case studies directly? I think let's start with the case study because everyone has already gone through. Let us go through the Yes, definitely. Queries से start करते हैं. Due to paucity of time, we will start with the case study first. So in the first case, a private specific trust is created for minor beneficiary, and said minor beneficiary is not allowed any right, control over his share during the age of his minority, nor any amount is distributed to him during his age of minority. But the income and corpus is accumulated and held for the benefit of minor beneficiary to be distributed to him after a certain period after his attaining the age of majority. Now in this case, first question is whether any clubbing provision under section 99 or SY 64 of 1961 Act would apply to parents of minor beneficiary in respect of yearly income. Please. So any views from that? But it's a specific trust, and every year it is having income. Yeah, it's the entire amount belongs to the minor. Now the question is whether the income that trust will earn on the corpus during the year, whether it will be clubbed with the parents of the minor or it will be deferred as because he is not entitled to get any money till he becomes major. But can you say because of distribution the income taxation can be deferred? Huh? How does the accrual of income gets affected? Right. So who will pay tax on that? So this is the second question. I think the second question is not. The first question is about whether there is any clubbing provision. So first we will have to determine whether there is any income which is being accrued to the minor. Then therefore only any question of clubbing will arise. So first we will have to determine whether any income accrues to minor. Any different answer? So therefore there is the question of clubbing in my opinion. Right. So though I am not supposed to give opinion, but actually when there is no accrual of any income in the hands of the minor, there is no question of any clubbing. So I think there is unanimity in this view, I think. Next, Doshi case. Most welcome. Doshi case will have. Subsequent, yes sir. Yes. Yes.
Previous income accrual, he may not be surviving at the time of Yes. receipt of the. There is So contingency. therefore, there is contingency. His interest is contingent interest. Because he is not getting any benefit or any sort of that thing, any benefit or any economic advantage of that fund. So therefore, I don't think that any income is being accrued to him. So Because he is not, the trustee is not receiving the income on behalf of minor. He is receiving the income for the benefit of minor, not on behalf of. There is a difference. There is a charging section which says, section 5, any income accrued or received on behalf On of. behalf of. Are we receiving any income? The trustee is not receiving any income on behalf of the minor. They are receiving for the benefit of the minor. For the benefit of. And that benefit may or may not be. Yes. Niकालो 60. Let us refer this letter to the learned speaker, because when we are not anonymous in our views, so therefore let it. Otherwise, we will not be able to complete our. So let it. So basically, So clubbing there is no double clubbing vis-a-vis Section- representative also you have Section taken. 64 will apply or not. So let the speaker give his views. No, we are not taking that to representative SSC में होगा कि नहीं. वो That's the next question. So, This is clubbing only. so, Next. so the follow-up question on this is, having assumed that the clubbing will not apply, then in such scenario, who will be charged to tax on such income? And how will the tax will be discharged? Yes, it is a specific trust. ये बैठने को हो गया क्या? हेलो नहीं हो रहा है. तो चालू कर, नहीं चालू है मैंने माने discussion. So, any views on this second question? Second part of the first question, when, if, suppose, because we have referred first question to the speaker, then suppose the answer is that no clubbing is there, then whether any tax has to be paid by the trustee, if yes, at what rate? Because he is a specific trustee, if at all the minor. In the like manner to the same extent. Individual normally. Normal in the like manner same extent. Next. But the no income is being accrued, we are taking that view that no income is being accrued to the minor. So how you can take the rate of the minor? No, if it is. If it is income to the minor, it will be clubbed. There is no question of any tax on the trustee. Suppose there is no clubbing. If taxable, in whose hands? Whether it is whether clubbing. No. If suppose there is no, then there is no clubbing. There is no clubbing on what ground? That no income has accrued to the minor. That is the only ground. So if no income has accrued to the minor, then how you can say that to the same extent and in the same manner as it would have been in the case of the minor? See, had it been clubbed, Yes. rate of tax क्या होगा? वो जो नॉर्मल उनके लगेगा, नो जो फादर के लगेगा वो, No, but नॉट ऑफ द माइनर. Father, No. clubbing होगी father में. क्लबिंग अगर फादर में होगी तो फादर को जो रेट लगेगी वो. अगर फादर के हाथ में क्लब होगा तो जो रेट ऑफ माइनर होगा वही लगेगा. So therefore the question is, suppose there is no clubbing, only then this question arises second part two of the first. Yeah. And in that case there is a catch is there. When we are considering that no income is accrued to the minor, then how the rate will be determined? Which rate should be applicable to the trust if it is at all taxed in the end? So Whether MMR or whether slab MMR rate or slab rate, whatever. तो ये भी I think this question also should be referred to the All speaker. questions.
It's Just in If there is no business give income, any view of we are, yours. if there is no You can business supplement. income, Okay. we have not discussed. If there is business income, then to MMR. Eh? Suppose we are discussing if there is no business income, this presumption should Yes, yes, yes. This presumption is there. that there is no business income. There is one presumption, there is no business income. So therefore, there is a judgment of Deepak Family Trust which says that the trustee takes beneficiary status and individual rates should apply in such. This is the view. Any other view if you have, so I will note down. and This will be referred to the speaker. Yes. Now the third part of this first question is that whether any tax liability would fall on beneficiary when corpus oblique income is distributed to him after his attainment of the age of majority, whether answer would be different if the trust is a discretionary trust. So first question is at the time of becoming major, when the corpus will be distributed, whether there will be any tax on the person who become major, and if there is any tax, what will be the rate of tax? And the subsequent question is there is no tax. Any other view? हाँ, क्लबिंग होगा तो फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वुड नॉट रेज. तो अपना जो सपोजिशन है वो ये है कि क्लबिंग नहीं होगा. क्लबिंग नहीं होगा देन दिस सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन. यस, भाई सेकंड और थर्ड तो तब ये राइज होगा ना जब क्लबिंग नहीं होगा. सेकंड थर्ड क्वेश्चन तो सेकंड से उसमें ट्रिगर ही नहीं करेगा, तो फिर अगर क्लबिंग हो गया तो ट्रिगर ही कहाँ से? गोपाल कुछ पार्डन, स्पेसिफिक ही तो है. स्पेसिफिक है, लेकिन मैंने लिखा कि अगर डिस्कशनरी होता तो कुछ फर्क पड़ता है क्या? बाद में आएगा डिस्क्रिशनरी, अभी स्पेसिफिक ही है. नहीं, मैंने ये साथ में क्वेश्चन में जो पढ़ा है वो ये है कि भी अगर बाई चांस ये स्पेसिफिक है तो कोई अलग ट्रीटमेंट है क्या, और डिस्कशनरी है तो कोई अलग ट्रीटमेंट है क्या? दैट इज आवर क्वेश्चन. कि whether there would have been the different answer in case this trust would have been discretionary. तो discretionary में तो मेरे ख्याल से नो ही होगा. तो अगर टैक्स MMR पर लग गया तो फिर दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन पर लगेगा. ये क्वेश्चन राइट होगा खाली स्पेसिफिक में. वन बाय वन है. डिटर्मिनेट शेयर्स भी तो हो सकते हैं. डिटर्मिनेट शेयर नहीं, शेयर आपका डिटरमिनेट इस केस में, क्योंकि सिंगल बेनिफिशियरी से इट इज वुड बी ट्रीटेड ऑलवेज एज डिटरमिनेट ट्रस्ट. स्पेसिफिक डिटर्मिनेट, ये स्पेसिफिक होगा. दो होते और अगर आपका शेयर डिफाइंड नहीं है दोनों बच्चों का तो आपका डिस्कशन. वन अगर सिंगल है तो इन एनी केस इट इज स्पेसिफिक. So corpus whenever will be distributed will not be subject to tax. So corpus will be without any tax. It will be distributed. What if the trust is discretionary trust? So these all, Second question. I think all the three parts of the first question should be referred to. because it is inter. नहीं, दोनों इसमें स्पेसिफिक और डिस्क्रिशनरी में नहीं होगा. डिस्क्रिशनरी को आउट कर दीजिए और खाली स्पेसिफिक को लीजिए. Then we should we move to the second question? We will have to go fast, otherwise we would not be able to complete. Second question. Second question: what is the status that is individual or AOP etc. under No tax. The view of the डिस्कशन में तो वो आपको कंफ्यूजन ही नहीं है. तो आपको confusion Paying every year. You cannot pay twice. discretionary में तो आपका tax. Then the next question is, what is the status that is individual or AOP etc. under Income Tax Act? Yeah, he wants to say something. Okay, sir. आप इधर ही आइए. सर आइए ना आप इधर. So question 1 is on the distribution of the corpus, distribution of the income to the beneficiary, very majority.
वेरिएबल से वापस देंगे इनकम लेंगे फिर उसमें भी दो चीजें स्पेसिफिक ट्रस्ट होते हैं एक डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट आपको बोला डिस्क्रिशनरी में इतना क्लियर है टैक्स के लिए स्पेसिफिक में सोचना पड़ेगा क्यों तो डिस्क्रिशनरी में क्यों आपको लगता है टैक्स के लिए इतना टैक्स पॉइंट से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ question to the office. Let's give the question. Whether it be taxed directly before on the beneficiary, when the corpus stroke income duality is distributed to them, distributed. If after the payment of the income duality, whether answer will be different to the customer is distributed. So they can be a different thing here for side क्या रहता है उससे बीच में कम आगे सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट करें और बीच में डिस्ट्रीब्यूट करें साथ ही साथ में दो स्पेसिफिकेशन किसी पकड़े बताइए आपको एक हाँ एक वही तो डबल क्यों इसीलिए कोई केस नहीं इनकम के लिए वापस एक एसेट है but once an income has been taxed, how can you Corpus tax has it been built twice? up. कॉर्पस सो द कॉर्पस में दो चीजें हैं आपका किसी भी कर सकता है किसी भी ले किसी के साथ भी कर सकता है उससे हम एग्जेंशन कैसे करते हैं हाउ विल गेट मनी अराउंड दैट फाइनल करते हैं सो अभी डिजास्टर के इसमें कॉन्ट्रीब्यूट थोड़ा सा ट्रस्ट में थोड़ा क्या तो मैं अपने बेटे को मेरे पोते को मैं पर पोते को मैं नीचे डिसेंडेंट्स को मैं दे सकता हूँ राइट हाँ मैं अपने फादर को दे सकता हूँ काम कर रहे हैं कर रहे हैं क्या मैं अपने चाचा को दे सकता हूँ दे रही है हम सब हो सकते हैं चाचा को दे सकता है यस अभी आप मेरे चाचा के खत्म ही नहीं हुआ ये तो इसको लेके बोलते हैं Have you seen that fine? That's a non-rate income tax act. Everyone made a representation in the 2025 amendment of the current law. मेरे लिए चाचा रिश्तेदार है, चाचा मेरे मैं रिश्तेदार हूँ. तो भाई चाचा ऊपर लिखते हैं. क्या लेकिन चाचा रिश्तेदार होता है. तो काफी नंबर है ना होती है. तो आई कैन बंद कर दो भाई तो मैंने देखिए 56 to 10. It is always seen from a recipient's perspective. So the receiver, inadequate consideration as a supplement. So if you get that, it's a very good thing. But if चाचा right? तो चाचा के लिए अब सर चाचा को जब बेटा मैं तुमको नहीं देता हूँ मैं तुम्हारे यहाँ पे प्लस को देता हूँ. Correct? Got it? तो मैं ट्रस्ट को देता हूँ उस ट्रस्ट के दावे वो भी एक्सेप्ट होना चाहिए नहीं चाचा आपको दे सकते हैं आप बेनिफिशियरी नहीं दे सकते 6 to 10 का जो प्रोविजो है उसमें इट इज फॉर सेटलर दैट इज फॉर सेटलर पर्सन contributing or settling amount to the trust for the benefit of relative. तो settler के point of view से relative होना चाहिए. it's one way is allowed second way is not allowed मेरा रिश्तेदार रहना चाहता है वो ज़्यादा मेरा रिश्तेदार so $56 of a resident correct so very good I'm getting from my charter. It's an example. But when it becomes a trust, then it becomes for the recipient. This is for the settler. For the settler. The settler is a settler
मेरे चाचा मेरे को बस गिफ्ट देना चाहते हैं इस पेट में मेरे को मेरे रिश्तेदार से मिला है yes I got it from my father my Chacha is I got my cousin is not there so my chacha so for me my chacha is there but if my chacha decides to give it to me it becomes trust one then the law says you have to see who are of the recipient you have to see who are the sender the one who is getting it the person who is giving it I am not the recipient. Therefore, you cannot put it in that trust. Now, interestingly, I cannot give to my chacha, but theoretically, I can put it in that trust when my chacha is available. Look at the anomaly. So, I give to my trust. No, I cannot come to that. So, technically, I can receive from my chacha, but I cannot see there are beneficiaries from my charge and trust. Correct? But if I give to one part of the law, I will give, cannot give to my charge, but I will give it to that trust with my charge reservation. But our problem arises, this is second leg. There are two legs to it. Second, distribute. Not distribution when it happens. The distribution will happen, then you see any taxation. Right? Now when you see the taxation at that point of time, so a trust is nothing but a calculator. Right? So it is passing through. It fails the test and I can give it by something. Because this trust is a vehicle which is just a pass through. Then it fails that test and I can give it directly by something. Therefore, you cannot give the charges trust or charges. But remember, the charger can never contribute to your own trust. Charger can give it to you directly. Right? So what was the question? So I will explain on 56. So the second thing is very clear. The second thing that was I will see the beneficiary are all relatives. So the second thing is if I take the pass-through argument, then the distinction is also equal. So this question is whether before on the beneficiary or income legitimate answer. It is already taxed over the government. But you have a question like it, which is there is an overseas trust and I am a beneficiary of that trust. And that trust has never been taxed in India and I am a recipient of that. Will that income be taxed? The answer to that is yes. Question number 3, 10 or something. Because the income has not been taxed. I am a beneficiary of a trust, but the income has not been taxed. So the logic is income once taxed, it will be double taxed. But when it comes to corpus is an asset. It's a capital asset. From a capital asset, this will be so from that perspective, only one thing has to be seen that I am contributing to the eventual beneficiary is to follow the income benefits. And that will be the pieces of the example. Okay. The foreign regarding secured by a relative of mine after the distributed and now when the last week was cut. So the perfect. Income purpose. Income will also be done. So like this for example, when we do some analysis, we know beneficiary and other solve the problem. वो solve करने में देखो मेरी distribute हो गए, but that we know beneficiary. ये distribute पर वो solve में दो 10 रुपए distribute कमाए, वो 10 रुपए after settlement of cost income debit distribution I or finally pay taxes. वो पैसे भी तुमको नहीं सर, ये बहुत है. सेकंड बहुत है. इसके बाद में जो ये बात है वो देखिए आपने हम आपको बाद में देखना. After the purpose is distributed, so purpose income को अलग करते हैं. मतलब कैसे जो डिस्प्ले को डिस्प्ले नहीं आप डिस्क्रिप्शन लेवल पे क्या है ऐसा तो नहीं करते. मतलब आपको 10 रुपए का और सीधी सी बात है जो आपको देखते हैं
there is a need for it. नहीं, argument के अंदर छोड़िए। वहाँ देना पड़ता है, वहाँ पेनल्टी। बंद करेंगे। साथ में चल रहा है नहीं क्या साथ कोई तो बोल रहा है कोई चल रहा है सेकंड कुछ संभालने नहीं दे रहा तो बनाए सर इसको वैसे भी कर सकते हैं कि साथ साथ में होता जाए तो वो फिर अपना जो बात है वो उसका सब वो साथ साथ में होता जाए कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं राइट No clubbing. No clubbing. It means no clubbing. Okay. No clubbing. It's very clear. This is but yes, after that. After the principal standing of he is saying that it should be clubbed. It should be clubbed. So that's going to be sad. So we use it. The next is representative. As a representative. Second part, sir. Second. आप केस के प्रिंसिपल में जब जाएंगे तो इट्स टाइम्स Their judgment stands still. Just because the amendment has not the principle of the change was made. If the answer to the moment, they are going to tax the trustee tax they can tax.
सब जगह ट्रस्टी करता है, बट आपका माइनर का स्लैब रेट मिलेगा कि पेरेंट का स्लैब रेट मिलेगा, डिफरेंट होता है। क्लबिंग हो नहीं रहा तो As an individual. सो क्लबिंग तो हो नहीं रहा है नहीं तो ट्रस्टी स्लैब रेट कहाँ गया सर? As an individual. आइए प्लीज आइए डबल भी कुछ है या फिर ये मैं प्रेफरेंस हाइट के पास सर के पास ये है मैंने कॉलम में हाँ सर आप कुछ पूछ रहे थे सर। क्लबिंग तो हो नहीं रहा है तो पेरेंट का भी स्लैब रेट तो फिर कोई स्पेशल तो आ नहीं रहा है। जस्ट एज एनी इंडिविजुअल जो स्लैब रेट्स अप्लाई होते हैं हैविंग एनी इनकम 166 succeed in the same manner and to the same extent the way the benefits I completely तो जब 161 के नहीं होगा benefit दो नहीं होगा because the no implementing it how he can take the slave rate of the He needs to ask his whether the normal basic exemptions and the slab rates should apply from beginning or not in the hands of the see my understanding is that all regular slab rates will apply. All benefits will be applied. normal life insurance will also Completely. under this section 160 वाला ही होगा 160 is after the specified 161 में. I know it's difficult to say the fast records. same extent concept So देखिए जब same extent सेम एक्सटेंट एज ए नॉर्मल ना तो माइनर का तो टैक्स क्लब ही हो जाता फिर कोई इसीलिए नहीं मैं समझ रहा हूँ ना आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली पर माइनर के बेसिस पे टैक्स नहीं होगा ये तो क्लियर हो गया ना तो फिर आप इंडिविजुअल के बेसिस पे करो ये तो क्लियर है बेसिस द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग कि माइनर के बेसिस पे होगा तो ही क्लब हो जाएगा टैक्स लगेगा ये जरूरी है हाउ कैन यू बी इंक्लूड टैक्स दैट इंटरप्रिटेशन कैन एनीबॉडी एक्सेप्ट and all the benefits of individual will also be available. डेफिनेटली यू जस्ट फाइल इट एज अ रेगुलर रिटर्न कमिंग टू द ये क्वेश्चंस हो गए Second, सेकंड में third. प्लीज पूछिए प्लीज देखिए इसमें तो सिर्फ इंडिविजुअल का या करिएगा माइनर का करने का स्कोप नहीं है उसमें आप इंडिविजुअल की तरह ही फाइल करिएगा बस उसमें रिप्रेजेंटेटिव एसएससी विल बी देयर एज अ ट्रस्टी बस दैट इज this is the next question no let us address सो देखिए क्या होता है कि आप ट्रस्ट में जब भरते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एओपी लेते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक कर लेते हैं कोई बात नहीं मैं बहुत टाइम सो स्पेसिफाइड ट्रस्ट तो सब अलग अलग फाइल करते हैं सो देयर 4 चिल्ड्रन इन दैट 4 माइनर्स तो चारों का अलग रिटर्न होगा रिप्रेजेंटेटिव वैसे सेम है चारों का अलग पैन नंबर होगा नहीं ट्रस्ट नहीं है रिटर्न 4 फाइल होगा ये डिस्क्रिशनरी नहीं है ये स्पेसिफिक ट्रस्ट है सर इसमें Decision में तो एक ही होगा. एक ही फाइल होगा रिप्रेजेंटेटिव एसएससी ट्रस्टी रहेगा और एक ही फाइल होगा क्योंकि आपको तो डिसाइडेड ही नहीं है ना एमएमआर लगेगा डिस्क्रिशनरी डिस्क्रिशनरी उसमें 5 बेनिफिशियरी 20 बेनिफिशियरी और माइनर मेजर जो भी हो एक ही होगा एक ही रिटर्न फाइल होगी ट्रस्ट का पैन नंबर होगा पर आपका जो ट्रस्टी विल बी द रिप्रेजेंटेटिव एसएससी आप स्पेसिफाइड है कि डिस्क्रिशनरी Specific. sir but we are filing one return for all the benefits सर अभी आप ट्रस्ट की रिटर्न फाइल करते हैं यूपी में जाते हैं हाँ तो वो गलत है ना वो करते हैं ना कर होते हो तो कोई ऑप्शन नहीं है system उसमें technology see I think so law is says something and when you go to the platform to file हम भी बहुत जगह में ब्लैंक करना पड़ता है कुछ भरना पड़ता है वो करना पड़ता है उनको रिटर्न फाइल अच्छा हाँ जी 10 का यस एकदम
एकदम क्लियरली मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? Can we go question by question? प्लीज आस्क. So क्या होता है, ट्रस्ट का अपने रिटर्न फाइल करते हो ना, अनफॉर्चुनेटली वो AOP बाय डिफॉल्ट में करना पड़ता है. No, I agree, but it doesn't make it an AOP. They are only see. Let's go by the law. Let's not go by what the system throws. So, incompetency of the department in upgrading the system cannot change the law, right? But you have to comply. So let it come. You make a disclosure. So there are many places you'll find when you file, we make disclosure. What do? I will follow what is the law. I will follow what is written in the act and the rules. But the system doesn't throw that. So Sara Trust, it's $1 million question. There's a ruling of the Supreme Court, this ruling of the special bench that a trust is not an AOP, only in some certain exceptional situations. छोड़ के, but आप फाइल कर दो AOP करके क्या करोगे आप? वो सिस्टम में ही ऐसा दे रहा है. So इसमें तो डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में तो डिपार्टमेंट ने सर्कुलर में बोला कि इंडिविजुअल का स्टेटस होगा, पर उसके बावजूद भी सिस्टम में दैट्स फाइन. आपको ऑडिट में कभी असेसमेंट की दिक्कत हुई है क्या आपको? असेसमेंट दिक्कत नहीं है. असेसमेंट में अगर आप AOP करके फाइल कर देते हो, बिकॉज दैट्स द ओनली वे आउट. आप असेसमेंट जाते हो, AOP को भी एक्सप्लेन करते हो, फेसलेस में भी लिख के देते हो, ये था इसलिए मैंने किया है. आपको क्या नहीं, मैं आपको AOP मानूंगा, मैंने तो एटलीस्ट फेस नहीं किया. ऑल अंडरस्टैंड. प्लीज सर. स्पेसिफाइड 5 लाख सबका इंडिविजुअल हो गया. 5 लाख सर पर एक चीज मैं पूछूं आपसे, चलिए ये लॉ छोड़ देते हैं, कॉन्सेप्चुअली मैं पूछूं सर, स्पेसिफिक ट्रस्ट कौन करना चाहता है? सर अरे सर मैं कमर्शियल लॉजिक पूछना चाहता हूँ. नहीं वो तो आप तीनों बच्चों के नाम पे भी करके चलो क्लबिंग हो जाता है. लेना है सेकंड क्वेश्चन चलते हैं सर. सेकंड क्वेश्चन सच में एक ही क्वेश्चन हमारा. अरे कल भी तो सबसे सुनना है, आज सुनना है, मिल जाता था. चलिए ना, we'll come back to this. अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटस पर ही है. What is the status that the individual or AOP etc. under Income Tax Act of the private specific trust having individuals as beneficiaries and private, यहाँ specific list दोनों आगे हैं, तो आप specific order काट लीजिए, वो कच्ची से यहाँ पर प्रिंट हो गए हैं. And private distinct trust having individuals as beneficiaries, whether it depends on the kind of beneficiaries or trustees like individual, company etc. This question assumes a great significance in view of provisions of Section 8 and 67(10) of 25 Act and corresponding sections 9B and 45(4) of 1961 Act, when change in beneficiaries upon birth, death, marriage of beneficiaries takes place as per trustee. And the second part of this is determination of status of the trustee is also important from the point of view of the provisions of TDS, TCS also, as there are certain exemptions to individuals while deciding applicability of TDS, TCS provisions. This is the question. So sir जैसे आंसर भी किए हैं, हिसाब से तो ये क्वेश्चन अपना ऑब्वियस हो जाता है. तो मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर दूं. हाँ सर, AOP की डेफिनेशन में एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ने डिफाइन की थी. दिस वाज इंदिरा बालाकृष्णन की रूलिंग है. AOP means an association in which 2 or more persons join in a common purpose or a common action, the object of which is to produce income, profits and gains. Produce income, profits and gains को मैं बताऊंगा ये रेलेवेंस क्या है. सो ये एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है. सो आपको लगता है बेनिफिशियरीज हैव कम टुगेदर फॉर डूइंग अ कॉमन ऑब्जेक्टिव? नहीं. सो AOP हो ही नहीं सकता, बिकॉज AOP की डेफिनेशन में ये बोला, क्लियर किया सुप्रीम कोर्ट में, पीपल हैव टू कम टुगेदर फॉर कॉमन ऑब्जेक्टिव टू इनकम, जनरेट इनकम, प्रॉफिट्स एंड गेन्स. थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ. इस रूलिंग को HEN निजाम फैमिली वाले की रूलिंग ने भी कंफर्म किया. कुछ कॉन्ट्रेडिक्शन भी थोड़े बहुत हैं.
amendment आया 2002 में, which says whether or not an AOP, whether it is not formed from the object of deriving income will also be an AOP. Does it change the situation? The courts have read that this is an insertion of the explanation was to cover the vacuum and bring charitable religious trust into tax net where they lose exemption under 10, 11 and 12. So कई charitable institutions है वो 10, 11 and 12 में exemption लेते ही नहीं है, तो वो कहाँ टैक्स होंगे? तो इसलिए ये डेफिनेशन चेंज किया कि अब आप ओपी के स्टेटस में आप टैक्स होंगे. इसलिए ये 2002 में इस डेफिनेशन को क्लैरिफाई किया गया, अगर प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव नहीं भी हो तब भी आप एओपी में आओ. सो चैरिटेबल ट्रस्ट which are not falling in 10, 11 and 12 will fall in the AOP definition. Now, in case of a specific trust, will it be an individual की तरह होगा? Yes. Because the trust is assessed as a representative, trustee is assessed as a representative assessee of the beneficiaries, and the beneficiaries are individuals. Therefore, the status is of an individual, not of an individual. Would it change if beneficiary? देखिए उसमें क्या हो रहा है, अगर डिस्क्रिशनरी है सो थोड़ा ट्रिकी है, बट अगर स्पेसिफाइड है सो इट कैन टेक डिफरेंट कलर्स. सर अगर स्पेसिफाइड है ए कंपनी, बी इंडिविजुअल, सी LLP, तब क्या करेंगे? Trustee is being taxed. सर ट्रस्टी इज अ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी. ट्रस्टी इज नॉट, तो ट्रस्टी कंपनी बना देंगे तो क्या ये कॉर्पोरेट स्टेटस थोड़ी हो जाएगा? इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव. इससे बेनिफिशियरी होता है असेसमेंट का. Different स्पेसिफाइड से देखिए, स्पेसिफाइड इज नथिंग, इट इज एज गुड एज मेनी फंड्स. तो क्या डिफरेंट सिचुएशन मान लीजिए कॉर्पोरेट सर स्पेसिफाइड नहीं होगा सर, डिस्क्रिशनरी. स्पेसिफाइड की बात करो. Suppose 1, 2 individuals are there, 2 corporate associates are there also beneficiary. One discussion interest itself is also beneficiary. Then whether the status will be changing with the beneficiary, but thereafter how the TDS will be deducted by the tax trustee, whether as an individual, इनकम whether as देखी a जगह corporate associate, whether as an इनकम देखी जगह आ रही है. मानता हूँ प्रॉब्लम है TDS की, चैलेंज है, इट्स अ बिग चैलेंज. सो फिर आप उसमें एक ही चीज कर सकते हो कि आप इसको पास नहीं कर सकते, रिटर्न में है कि पास यू कैन पास इट थ्रू. TDS रिटर्न से प्रॉफिट कितना प्रोपोर्शन करेंगे, कितना प्रोपोर्शन करेंगे. by deducting this status. I said they can do Single brand, you deduct as a deducted, so you can deduct with AOP, and then AOP by confirmation that it is passed to the tax. सर प्रॉब्लम क्या होता है ना कि किस प्रोपोर्शन में इनकम देखी जगह इंडिविजुअल को कई एग्जेम्पशन है, ये कितनी और इंडिविजुअल का TDS का रेट और दूसरे बेनिफिशियरी का रेट अलग हो सकता है. आप हायर रेट लगाओगे. इसमें सर एक पॉसिबिलिटी है कि यदि बिजनेस इनकम है तब TDS की अप्रूवल ज्यादा आती है, उस केस में MMR आती है स्पेसिफिक ट्रस्ट. MMR तो फिर चार्जिंग के लिए, बट हाउ टू डिडक्ट द टैक्स ऑन द पेमेंट बीइंग मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर्स पेमेंट TDS. राइट. दैट इज लाइक देखिए एक चीज कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पे मैं कंजर्वेटिव को अप्लाई करूंगा. आप देखिए डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में क्या लगाते हो सर? MMR लगाते हो. हाईएस्ट स्लैब क्यों लगाते हो सर? क्यों लगाते हो? कंजर्वेटिव हो गए 164 का कॉर्पोरेशन कुछ था कि कंजर्वेटिव हो गए सबसे हाईएस्ट वाला लगा दो. तो TDS में भी अगर आपके बेनिफिशियरी ज्यादा के डिस्क्रिशनरी में तो हाईएस्ट स्लैब में अब क्या करोगे? आपको तो बचना ही होगा. ये तो फिर एग्जेम्पशन नहीं क्लेम करना चाहिए. लेकिन जो दोज जजमेंट्स व्हिच आर सेइंग दैट द ट्रस्टी विल बी असेस्ड एज एन individual even if there are multiple beneficiaries. No, but that is for discretionary, sir. No, for But फिर एक को सबकी इनकम लेके नहीं करना स्पेसिफाइड, तो चार के अलग रिटर्न है. तो स्टेटस बोला है कि इंडिविजुअली रहेगा चाहे कोई. एकदम क्लियरली है इंडिविजुअल है सर. तो फिर why should I not get the exemption of individual tax rates and other exemptions also for CDS also? So sorry. आप सर ये सामने ये इससे बेटर. आई एम सो सॉरी मैम. आई एम सॉरी. थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग. किस चीज में बताइए? So whether it's a discretionary trust or a specified trust. स्पेसिफाइड ट्रस्ट में क्या होता है कि इंडिविजुअल जो एक स्पेसिफाइड पोर्शन होता है इनकम का, उसके बेसिस पे सेपरेट रिटर्न फाइल होता है. रिप्रेजेंटेटिव एसएससी सेम ही रहता है पर अलग अलग पैन नंबर्स पे होता है.
किनको रेट लगेगी? तो बेनिफिशियरी के बेसिस पे रेट लगेगी. बेनिफिशियरी You are actually getting advantage. Yes. Test your luck. Yes, ma'am. जो कि clubbing हो जाता है otherwise. I have not filed it. I have not done it for my child at least. But yes, there is a possibility. मैम मैंने माइनस का नहीं डील किया ऐसा, but practically अगर हम मेरे से पूछेगा, you can test waters with that. You can test waters. But it is possible. If you ask me technically, it's possible. You can test waters, madam. That's what I'm saying. Technically, There is a business in the trust. there is a business in the trust. There is a business in the The commercial property is rental income. Business income होने से MMR लग जाएगा. If it's a PGDP, PGBP है ना मैम, तब उसमें MMR लग जाता है. So उसमें क्या इंटरेस्टिंग चीज लिखा हुआ है कि अगर PGBP है स्पेसिफाइड ट्रस्ट में भी तो सब सारी इनकम पे आपका MMR लग जाता है. सारी इनकम. हाँ तो so it will be paid by that individual PAN number में it will be paid by this. So the trustee becomes the representative SSC and he'll file a return for that specified but he'll pay under the MMR. Because business income होने से all income will fall under the MMR. Still ma'am, PGBP होते ही MMR में चला जाता है. The moment there is a PGBP, it goes to MMR. Come again, ma'am? Then it is not MMR. Then individually, according to that, we enjoy this leverage. It might be. अरे इसको माइक रखिए, कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसको माइक दे दीजिए. कोई एक चीज बता दीजिए. Minor is a beneficiary in two trusts. One from father side designated as one trust for education purpose, and the mother side also declared as one maternal uncles and maternal grandfather designated as Very good. Very good. So, Yes. Third plan also, its father might have created for plumbing purposes. so now we have created two part numbers and one part number. I cannot think of an answer. Something like that. Right now, sir, we have a trust called Vitam Trust. So where the Vitam is the last king of Telangana in the year 1953. After that, Telangana was to United India. Okay. So before that, the last king of Telangana. And he is the secretary trust. And now the trust is almost more than 67 lakhs of their actual settlements. 6 lakhs. That's why one family, everybody wants to pay the Is it defined as specified trust? government of judgment करना होगा. Government of India asking to pay a royalty on the properties to because and those properties in the post without trust and they will deposits and down the they have the interest and the interest is surplus because of the 6 types of benefits. Now, No. What is serving the children? the Of these children? yeah, Of the children, descendants? so they paid for private properties like Charta and what are the government of so when they handed over to the government of India and the bilateral government of India is making some royalty payment to the family of Islam. Okay. So once almost of 400 crores of money to divert to the figure, that is kept in the bank. Interest from those funds are going to the 3 months of the bank.
done. So now, So I have a humble suggestion. Go for the MMR and file it. I have a, sir, I have a question here. Sir, I have a question here. Please. If the specific ये अच्छा केस था. ये good case. sir, in case of specific where there are more than one minors, more than one individual as beneficiary, and the law also suggests that the trustee or the trust can be paid tax or the beneficiary can pay tax. Anyone can pay tax at the option of the SEC, right? So can we take a view that the trust can take an individual stand, file the return, pay the tax, and distribute the income to the beneficiary instead of taking so many tax? I mean, if there are 10 beneficiaries, Yes, they can. But only challenge is that all has to be individual. all have to be individual, and then second is that if this amount is so large in size, then as a conservative, you take an MMR. मतलब आप फिर Sir, I'm not talking about निजाम वाला. 10 beneficiaries. 10 ही बोल रहे हैं. अभी बात हो रही थी 10 पैन लेना पड़ेगा. There are a lot of compliance into that. Instead of that, can we for a specific trust where individuals are the beneficiaries? Can we take PAN in the on behalf of trustees from on But you will not- the name of trust You in can the do that. individual capacity, file the return for the trust, pay the tax, and distribute the income to the beneficiary. एक रिटर्न पे काम बताओ. हाँ वो जो बेनिफिट है वो चला जाए. कहीं तो या तो 10 पैन अप्लाई कीजिए या 5 बेनिफिशियरी. Yeah, let's go to the next question, please. Question number 3. Please. चलो हो जाएगा. मिक्सअप हो गया अपने. मैं जितना आंसर किया ना आगे के क्वेश्चन आंसर हो गए. The third question, whether there is any significance of absence of the word, if any, in section 270 of 25 Act, after the word surcharge of income tax while defining maximum marginal rate MMR when compared with section 229C of 61 Act. Earlier in 229 of the 61 Act, the words in the brackets were after income tax were including surcharge, if any. Now, if any word has been removed while 225 Act, so whether there is any significance of this removal of the word, if any. Yes. Earlier the surcharge would be applicable and the slab rate now would be 10% of the maximum surcharge rate. Will it be? Will it be? I think that is a condition of the report of event. So, if you ask me, the special bench ruling of Aradhya Jain Trust, and there are many more rulings, Chanda Marriage, beneficiary, and all of that, they support that the word if any, and the foundation of the argument was the word if any. But that's a settled principle now. Now, Income Tax Act 2025, what does it say? I will not change the rates. I will not change the policy. So, do I stick to that principle? Do I stick to the FAQs issued by the CBDT? Do I stick to the finance minister's speech? Do I stick to the memorandum, or do I stick that ruling is not applicable because the word if any, because the outcome of that word if any is the change in rate, but they have said they will not change the rate. But the act is procedure. No, fair enough, but is not to change the rate. I think So, first, They did not mention in act, they under the other नहीं But part of the memorandum also. and that what I think is the act. The act is sir, no, Ashim, what Sir. sir is saying कि 2025 एक्ट में ये क्लैरिफिकेशन था कि there will not be any change of rate, right? your clarification is not part of the act. That is my suggestion is that particular clarification is not part of the subject. अच्छा एक चीज है, if you look at the parliamentary committee report also, everything was discussed. Fast track mergers, everything was discussed. This was not discussed.
So I have my doubts, so it's a 50-50 situation. If you ask me, I will not say let it go. Sir, I would supplement here something like that. That if any, first we will have to ascertain whether there was any role of these words, if any, in the Aradhya Jain's case. And if was there, to what extent, what was the actual significance of that word, technical significance of the Aradhya Jain's case. So if that, there was any foundation on the basis of if any only, then it would affect. Otherwise, Using against that. only on that basis, or there was some other foundation. That was the foundation. That was the argument. Then I think that this removal may affect the rate also now. I think so. We should make a representation that this was an accepted principle. You assured us there will be no change of rate. So please, I think the representation is worth the representation. I think my That's what अच्छा इसके लिए नहीं किया इसके लिए तो कैपिंग नहीं फॉर प्राइवेट ट्रस्ट देयर इज नो कैपिंग सेक्शन तो कोई कवर नहीं तो 352 में डाल हाँ वो अलग से So dividend पे है, capital gains पे है आपका? वो तो है डिविडेंड तो कैपिटल गेन पे तो पहले भी था वो अभी भी है इसके अलावा तो कोई डिविडेंड पे कैपिंग है आपका? डिविडेंड पे कैपिंग है, कैपिंग 15% जो था सच्चा का कैप ये बोले सेक्शंस में 12% फिक्स कर दिए दो और सेक्शन है अदर देन मेरे हिसाब से इसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए गवर्नमेंट को बिकॉज दिस इज समथिंग यू कैन नॉट टेक अवे अ बेनिफिट व्हिच इज देयर नेक्स्ट क्वेश्चन then the next question whether sale of the immovable properties held by a trust where one or more minors are beneficiaries in a specific public discretionary trust may pose a problem because of involvement of minors as beneficiaries. Because the property belonging to the minors are different to the sold. So therefore, in that context, this question has been raised. क्या बोलना है आपको? इसमें एक वर्ड है स्पेसिफाइड ट्रस्ट, स्पेसिफिक ट्रस्ट, स्ट्रोक डिस्क्रिशनरी. मेरे को दोनों का अलग आंसर मिलेगा. क्या कर सकता है? बेच सकता है. पर ट्रस्ट नहीं. मैं बोलूंगा नहीं. ट्रस्ट में पावर्स है कि नहीं वो देखिए. में पावर होगा. ट्रस्ट डीड में अगर पावर्स है तो कर सकता है. There has to be specific. So it's very specific powers have been given. Yes, discretionary. Yes, it's a more simpler answer. What about specified? So in my view also it should be power is Even if there is any specific power in the specific trust also, and the beneficiaries are minors. So I will say it would affect. See, I'll tell you, the owners, you have to go that extra mile when it is a specific trust. मैं इतना ही बोलूँगा. You have to go that extra mile. I mean logic पढ़ता हूँ. In a specific trust, the minor beneficiary possesses a vested or determinate beneficial interest to be discretionary में नहीं होता है in the trust property. While the sale by the trustee may remain legally valid, an unauthorized sale at an undervalue, or transaction prejudicial to the beneficial's interest could expose the trustee to allegations of breach of trust. And the beneficiary may challenge the conduct of the trustee upon attaining majority. Importantly, the beneficiary's interest would ordinarily not extinguish upon sale but would attach to the sale proceeds, which should continue to be held and applied upon the same trust. Accordingly, trustee should ensure transparent valuation, proper documentation, and preservation and reinvestment of proceeds in accordance with the trust deed. आपका onus देखिए answer is same for both, but the onus is more when it is a specified as. Now coming to a discretionary trust, let me just read it. In contrast, in a discretionary trust, a beneficiary
generally does not possess a vested interest in any specific trust asset until the trustee exercises discretion in favor of such beneficiary. Hence, the possibility of challenge by a minor beneficiary may be relatively weaker, and the trustee may enjoy greater latitude in dealing with the trust property. Please. Very good, very good. Now let me read. I knew this was coming. See, a common concern is whether the prior court approval is required, akin to a sale of minor's property by a guardian. However, the provision governing alienation of minor's property by a guardian, including those of Hindu minority and guardianship framework and the guardianship, guardians and wardens regime, should generally not apply in this context. Since the property belongs to the trust and not to the minor directly, and the trustee acts in the capacity of the trustee, not the guardian. So the legal ownership is with trustee. The sale proceed of the property will become now become the. So एक चीज है कि जो डायरेक्ट एसेट है वो देखिए गार्जियन का बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है. I'll tell you, I was buying a property and the beneficiaries were two minors and there was a guardian. मैं उससे बहुत कुछ लिखवा रहा था कि कल को, and because I know what happens is that प्लॉट करते हैं, प्लान करते हैं कि उसने बेच दिया गार्जियन ने, जो बेनिफिशियरी माइनर से बड़े होकर बोलते गार्जियन, जबकि इन कन्वाइवेंस वो गलत था, वो बदमाशी किया, आपको अंडर वैल्यू में बेचा. ये होता है, ये स्कैम है, ये स्कैम चलता है इंडिया में, होता है. मतलब वो लोग कन्वाइवेंस में करते गार्जियन माइनर खड़ा होके केस फाइल करता है कि गार्जियन ने गलत किया, ये 200 करोड़ का था. एंड आई नो फैमिली फ्रेंड, उसने 20 साल बाद क्लेम आया, उसने सेटलमेंट के पैसा और देना पड़ा 20 साल बाद, 20 इयर्स के बाद दिया है, आफ्टर 20 इयर्स. कोर्ट से ले आओ. हाँ जी सर, very good question, sir. So, which is better? The trustee has much larger role, and they cannot sell out the property at this rate because of maturity. The beneficiaries who are minor at this rate will challenge in the court of law, which is unlikely. No, it's not unlike. I'll tell you ऐसा है कि समझिए there are 5-6 properties, right? So स्पेसिफिक ट्रस्ट में क्या है, उसका डिफाइंड है, ये प्रॉपर्टी इस माइनर के लिए है, सो यू कैन टारगेट. बट अगर 5 बेनिफिशियरी और एक प्रॉपर्टी है तो पांचों बेनिफिशियरीज को टुगेदर आके बोलना पड़ेगा कि भाई इसने गलत किया है. एक बेनिफिशियरी बोलने से नहीं हो जाएगा कि गलत किया है, बाकी 4 बोले मैं ठीक हूँ, राइट. बट स्पेसिफाइड में क्या होता है, इट इज 1 to 1. सो 4 एसेट है, 4 बेनिफिशियरी अगर है, 2 बोले तो अपने एसेट्स के लिए दे कैन रियली ड्रैग द ट्रस्टी टू द कोर्ट, से दैट तुम्हारा जजमेंट गलत था, पर उसमें भी प्रोटेक्शन है. आपको बोनाफाइड इंटेंशन है, वैल्यूएशंस है, डॉक्यूमेंटेशन है, तो उसमें भी आप बच जाओगे. पर ये वाले चीज में ज्यादा रिस्क रहता है, जहाँ गार्जियन रहता है. नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन सर, देखिए किसको बचना, आपने पूछा इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कौन सा बेटर है, बचना किसको है, वो तो बायर को बचना है. तो बायर थोड़ी डिसाइड करेगा, स्पेसिफाइड होना चाहिए डिस्क्रिशनरी. ही इज नॉट गोइंग टू डिसाइड व्हेदर इट्स गोइंग टू बी स्पेसिफाइड और बेनिफिशियरी, राइट सर. सो जो क्वेश्चन आपका है कि इमूवेबल के लिए बेटर क्या है, मतलब फ्रॉम अ बायर पर्सपेक्टिव यू आस्किंग दैट क्वेश्चन, बट दैट ही हैज नो राइट टू डिसाइड. बट आपका आई विश आई हैड दिस क्वेश्चंस, मतलब ये सारे लीगल क्वेश्चंस हैं, एंड आई थिंक सो 3rd जुलाई में कब होगा एक सेक्शन, आई विल डू मोर कमर्शियल, बिकॉज ये तो सब आंसर आपको मैं दे दूंगा कभी तो आपको मिल जाएगा, या फिर इंटरप्रिटेशन का इशू है. जजमेंट होना चाहिए कि डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट के क्लॉजेस क्या होना चाहिए. दैट इज, इट टेक्स 1 year टू डिसाइड. बिलीव मी, इतना मतलब फोरसाइट में सोचना पड़ता है आगे का. आई एम सो लाइक, ओके, सॉरी, आई एम डिविएटिंग. कैन आई डिविएट फ्रॉम द टॉपिक प्लीज? So when did India get independent? 1947. Who were the rich people in India? The Nizam was a rich man. The Birlas, the Tatas, or the few other families, probably a handful of 10 families or 20 families across. We were a poor country. Let's accept that in 1947. Where was the richness? Okay, World War II happened. Germany went down, but Europe had a lot of money. आज Heinz sauce आप जो सुनते हो, it is under a trust which is there for more than 100 years.
आप कई सारे ग्लोबल ब्रांड्स हो गए, आप स्टंड हो गए 200-300 साल से ट्रस्ट के अंदर में. कम अगेन इन यूरोप. So trust is not a last 50-year phenomenon. It's a 300-400-year phenomenon. 400 साल से ट्रस्ट बन रहे हैं. कई सारे castles, कई सारी प्रॉपर्टीज यूरोप की. They had seen money long before we had seen. ठीक है, we had money also, but we lost it. And we were a poor country in 47. हमने पैसा देखना शुरू किया लिबरलाइजेशन के टाइम से. 1980s में एक बाउंड देखा, फिर 1992, 94, 96 में हमने एक पैसा देखा. That is when we saw money. ट्रस्ट का फिनोमेनन फिर शुरू हुआ. फिर उस समय जो 92s में जो ट्रस्ट बने, ये सब ने जो बनाए, नेक्स्ट जनरेशन में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो उसके लिए बनाए गए. आज पहली बार मैं बता रहा हूँ, लास्ट 1 साल से 5 ट्रस्ट के रिक्वेस्ट आए कि मैं चाहता हूं कि मेरा परपोता का परपोता इसको एंजॉय करे. कैन यू मेक अ ट्रस्ट विच इज परपेचुअल इन इंडिया? No. So our Indian Trust Act has to now modify. Section 14, Our Indian Trust Act has to change, which is कब का Indian Trust Act? 82, 1882. 1882. ये तो अंग्रेजों ने लेके आया था. Please. आपको डिफाइन. No. This is it. I am not prepared any presentation. Actually, few participants were requesting for the presentation. This is the presentation only. Sir is dealing the case study in detail. Sir does not have a separate presentation. So I'm the sorry, next, I didn't. No, Yeah, not at all. We are enjoying, sir. So the next part which was There is- where there Sir is was no deliberating, delegation we are merging both them. So by 5 maybe we will complete both the case studies, Yes, and then we will have 45 minutes or an hour for the third case study. So Yeah. 2 more the initial 2 case studies. Let us continue the presentation part and the discussion part till around 5. But this model is avoiding repetition also. Yes. First we are discussing again the And I'm giving some commercial aspects also. India is changing today. Promoters are asking, I want a trust for 100 years. I tell them, sir, there's no perpetual clause like European trusts. Sir. I cannot have a trust for 400 years. What's the maximum you can go? I said, to the extent of your unborn grandchild. That is the maximum I can do. We are doing that. Unborn grandchild. मैं वहाँ था अनबॉर्न ग्रैंडचाइल्ड नहीं कह सकता, अनबॉर्न ग्रैंडचाइल्ड वहाँ तक जा पा रहा हूँ. मतलब मोटा-मोटी 80-90 years कवर कर लेंगे. So people don't want to give it to their children now. People want that their next to next generation comes, and if possible, can they extend it? And I'm telling you, there will be an amendment, because see, there's one question which has been covered. It is very unfortunate that Baki case which came up. You cannot take out money and give it to a charitable institution from a private trust. Most unfortunate thing a country can see. Matlab, a rich man who makes billions of dollars, he said, I'm going to get 20%. He cannot make a trust. He said, after I die, 20% of my wealth has to go from my trust into a charitable organization for charitable. He cannot do that. He'll have to do it via will only. That is the unfortunate part of this country. You go to Europe, आधे से ज्यादा तो charitable बने हुए वहाँ पे. Why have these societies grown? America, if you go 200 years back, when money came in America 200 years back, there are so many rich people who didn't give anything to their children. I think so even Bill Gates and many of them were saying that we'll hardly give anything to our children. We'll just give 5% of our wealth. 80-90% we'll give it to charitable purposes after my death. But we have discouraged that in India. No, so what happens is solely for the purpose of relatives. That's 56. That's the problem now. So it becomes a taxable event. So the word solely, if it is not, if we add, If it's a discretionary cost, 56 to 10, and if you give a clause that very interesting thing. Very interesting thing. You will all face from your promoters. They want to give 20% of the wealth to the charity from the trust, and they cannot do it. That is the reality of this country. You can only do it by virtue of a bill. We have done something smart this way. I'll give you an answer to that also. Yeah, please. Anybody complete it. my question is, if you give a clause that the beneficiary will be the linear descendants, and if there is no linear descendants aligned, then the entire corpus will go for the charitable clause. That is possible. That is possible. But during the lifetime of the linear descendant, then
giving part of. See, वो तो आप दे सकते हैं, जब कोई नहीं बचा तो चैरिटी में चला जाएगा, ठीक है. बट अगर आपका एक भी डिसेंडेंट है और आप उसमें ऐड कर रहे हो, you unfortunately this ruling which is the Baki's ruling, it is so unfortunate that it gives that even if you think of it, even if you think you're not allocated, even if you think that I will give, think it is a taxable transaction, contribution to a trust. But one thing what you can do is, what we have done is that in the beneficiaries, we have smartly made someone, one of the family members who's a trusted person. So उसमें कि इसको जैसे ही मेरी डेथ होगी उसको इतना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा फ्रॉम दिस ट्रस्ट से जाके इसमें चला जाएगा उसके हाथ में, और उसके हाथ में एक ऑब्लिगेशन क्रिएट कर देगा इसको चैरिटी में यूज करना. सो वी आर, सो देयर इज अ ट्रस्ट, दे हैव 10 फैमिली मेंबर्स, वन ऑफ देम इज अ गुड बॉय, ही डिसेंट्स, सो एंड ही विल नॉट ट्राई टू एक्ट वेरी स्मार्ट. So we say that the moment something happens to this person who's a settler, we say I pass away, 20% of this distribution of this kind of liquid wealth will go to this beneficiary specifically. Discretionary मैं किसी को 20 दे सकता हूँ, बाकी को 0 दे सकता हूँ. एंड उसके हाथ में एक ऑब्लिगेशन क्रिएट कर दिया, उसके पास जब जाएगा उसको ये करना पड़ेगा, उसे चैरिटी में डालना. So I'm creating an obligation in his hands. He can still wriggle out of it, but then it's like the good boy in the whole family. So that is the way we are doing it, because keeping it by virtue of a will is still risky. Where you may just tear it apart and say, we don't honor it. So it's a very, this is the last will. We are all seeing this litigation around wills. The benefit, the biggest benefit of a trust is litigation free. Because in the lifetime of the settler, the trust is living. Whereas the will is a dead document, it comes to life only after the death. Please. There is nothing in India. Perpetual doesn't happen. In Europe, it happens. So you can keep it. The life of is up to the no. So you can put it to the unborn child of your son till that person. Something of that sort. You can put a clause and take it to a longer 80, 90 or till his death. So till the unborn child's death, it is. So आपने क्या 100 years कर लिया ना? 110 years कर लिया. Something of that sort. Okay. My child can. So I am preparing the trust. I have a son. I don't have a grandson. My son is not married. He's 21 years of age. And I say, or he's married. He's married, but the child is not yet born. So I can put a clause that till the time the death of this unborn child of my child, the unborn child of my child, तब तक ये life रहेगा इसका. ऐसा मैं clause डाल के extend कर लिया ना. So assume he has a child at 28. He lives till 80, so 80 plus 20. Come again, sir? 2 generations forward. 2 generations forward, the target. In case you have already grandchild, but then grandchild of grandchild. Yes, you can. You can attempt. Basically, there is no age. There is an end. There is a life. Unfortunately, Indian Trust Act has a life. Attempt कर सकते हैं. Then it will be dissolved. Yes, that's a life. That's the life of the trust. So there is no definitive age. So till the time the legal descendants are alive, You cannot give them all the information. इतना open-ended. कभी भी कोई lenient descendant रहेगा, इतना open-ended नहीं. So see, that's what I'm saying. Today people are asking, how can I keep the trust perpetual? Perpetual is not an answer, but how much you can extend it. That is a very big ask for everybody. Okay, let's move to the next question. Immovable property, I think so I'm clear. yes. So people confuse it with guardian. It's not guardian. Trustee has all absolute rights. But yes, someone can challenge him in the court that your conduct was not. I mean, he just had to prove that his conduct was bona fide. That is it. Question 5. Will you read the question, sir? Question 5. Whether where settler intends to settle his holdings in listed securities held as a part of promoter group or held as other normal shareholder, the same would require adherence to any SEBI regulations even if all the beneficiaries are relatives of the settler. So how many of you are well versed with the takeover code? No. So now what I'll do is I'll make you all aware of the takeover code also under the SEBI regulations. So there are a couple of regulations. I'll read it out very short. One is regulation 3.1, which is acquisition of 25% or more voting rights.
no acquirer can acquire shares or voting rights in a listed company together with its existing holding and that of persons acting in concert. PAC बोलते हैं, person in concert, people in concert, persons in concert, exercise more than 25%. So the moment I, along with the people I am acting in concert, if I move above 25, I have to go for an open offer. मुझे बाजार में खरीदने शेयर, किसको किसको आके ऑफर करना बता दो. 24.9% तक मुझे कुछ नहीं करना. I can keep acquiring shares up to 24.9%. This is rule number 1. 3.1. Please remember this. इससे नहीं आना. उसको पूरा Yeah. Remember this rule. Anyone up to 24.9% doesn't have to go to SEBI. The moment he crosses 20, he's going for 25 and above, he's got to go tender an open offer. Second situation. Anyone who's more than 25% already, more than 25% and less than 75% है नहीं पता promoter को, clear है. So anyone who's more than 25% in a particular financial year, if he's taking more than 5%, he has to again go for an open offer. So first rule is 25% से ऊपर जा रहा है पहली बार, और जो 25% से ऊपर जा चुका है वो उस साल में 5 से ऊपर कर रहा है, उसको भी ओपन ऑफर करना है. सेकेंड रूल. थर्ड रूल. Even if the combined shareholding of the acquirer and the persons in concern, मतलब हम लोग 5-6 जन जो मिलके हैं, हमारा 65 है या 70 है, वो 70 ही रह रहा है. So 4 of us, I, persons in concern, हमारा 70 है आज, 70 ही रह रहा है, पर हमारे बीच में 25 का क्रॉसिंग हो रहा है किसी का या 5 का हो रहा है, तब भी आपको करना पड़ेगा. 3 rules. Please remember these 3 rules. Now next rule. Indirect acquisition of shares or control. ये कई बार आता है. होल्डिंग कंपनी है, नीचे में आपकी लिस्टेड कंपनी. If a person acquires shares, voting rights and control over another company or entity, and because of that the acquisition becomes entitled to exercise the prescribed level of voting rights or control over a listed company, such acquisition is treated as an indirect acquisition. So मतलब ये भी उसी कैटेगरी में पड़ जाएगा. अगर मैं होल्डिंग कंपनी में कर रहा हूँ, 5 इफेक्टिवली बढ़ रहा है, 25 बढ़ रहा है, तो वो भी आ जाएगा. These are the 4 rules. Where are the exemptions? Please be mindful. ये ट्रस्ट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट एग्जेम्पशन है रिलेटिव्स. So मैं अपने फादर को दे रहा हूँ लिस्टेड शेयर्स, टेक ओवर कोड अप्लाई नहीं होगा. मेरे फादर मुझे दे रहे, टेक ओवर कोड अप्लाई नहीं होगा. Persons named as promoters for at least 3 years. Not my relative, but he's also a promoter in the company. I'm also a promoter in the company. He's been a promoter for more than 3 years. I can transfer the shares to him. I don't have takeover code doesn't get triggered. मुझे open offer करने की जरूरत है. Interesting. Interestingly, अच्छा ठीक है. सेबी ने बोला कि इसको छोड़ के मैं आपको गाइडलाइंस देता हूँ. ब्रॉड, इंडिकेटिव गाइडलाइंस, नॉट बाइंडिंग. No change in ownership or control of the listed company shares. Trust in substance should be a mirror image. अगर आप ट्रस्ट में डालो, trust should be a mirror image of the promoter shareholding. So when you are transferring, they should not. मतलब apart from this, you can go and take an approval from the SEBI also. 2 exemptions are immediate relatives and promoters for more than 3 years. These are the 2 exemptions. But beyond that भी आप कर सकते हो. SEBI से अप्रूवल लेना पड़ेगा exemption. So when you go for an exemption, उसमें कुछ गाइडलाइंस बोली है कि ठीक है ट्रस्ट में डालना है, डाल सकते हो, पर मिरर शेयर होल्डिंग होनी चाहिए मोटा मोटा. सेकेंड, individual promoters or the immediate relatives or lineal descendants should be trustees and the beneficiaries. इसका मतलब है कॉर्पोरेट ट्रस्टीज नहीं अलाउड होगा. Trustees will not be entitled to transfer or delegate any of their powers to any person other than one or more of themselves. मतलब relatives के अंदर में ये सब होना चाहिए. Transferors are disclosed as promoters in the shareholding pattern for last 3 years. No layering in terms. मतलब एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, हम लोग जब प्राइवेट ट्रस्ट करते हैं, नीचे में कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है, तो एक ट्रस्ट का बेनिफिशियरी दूसरा ट्रस्ट, दूसरे ट्रस्ट का बेनिफिशियरी तीसरा ट्रस्ट, हम चाहते हैं 3 जनरेशन बेनिफिशियरी रहे. सो ग्रैंडफादर, उसका बेनिफिशियरी बना फादर ट्रस्ट, उसका बेनिफिशियरी बना ग्रैंडसन ट्रस्ट. ग्रैंडफादर, फादर, ग्रैंडसन.
So you can do beneficiary, one trust is beneficiary of the other trust, and the third trust is beneficiary of the second trust. But SEBI says I not allow it. So इसलिए बोलते हैं कि जब आप लिस्टिंग में जब जाते हो उसके पहले में अगर लेयरिंग करना है कंप्लीट कर लो 1 साल पहले, बिकॉज जो बनाया हुआ है SEBI डिसमेंटल करने को नहीं बोलता है, पर लिस्टिंग के बाद में अगर आप अप्रूवल लेने जाओगे मल्टी लेयरिंग बोलेगा मैं दूंगा ही नहीं. Then any change in the trustee beneficiaries and its ownership and control of voting rights should be disclosed to SEBI and the stock exchange in 2 days. But in guidelines ke beyond we have seen that even though the conditions provided by SEBI are not strictly adhered to, exemption has been granted by SEBI. So don't say that these informal guidelines are the 4 corners of the law. These are just minimalistic guidelines. But there is very interesting 2 more regulations I would want to read. One is SEBI PIT regulations. It prohibits contra trade, which is buy and sell of a transaction by a designated person, including a promoter and immediate relative, within a period of 6 months. इसका क्या मतलब हुआ? मैंने आपको बोला था 2 exemption है. क्या exemption बोला था? Immediate relatives and promoters who have been there for 3 years. पर मैं इनको भी जब ट्रांसफर करता हूँ उसके बाद 6 महीने तक नहीं कर सकता. सो ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट जो भी समझते हैं यहाँ पे, ट्रस्ट में क्या होता है कि मैं समझिए मैंने एक अच्छी कंपनी बनाई, वो लिस्टिंग हो गई, अब मैं चाहता हूँ ट्रस्ट बने जिसमें मैं भी बेनिफिशियरी हूँ, मेरी वाइफ भी हो, मेरे बच्चे भी हों. बट मैं अगर जब डालता हूँ तो मैं रिवोकेबल बनाना चाहता हूँ, इरिवोकेबल बनाना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रीब्यूट करने से नहीं होगा. करेक्ट? सो हमको क्या करना पड़ता है? हम अपने फादर को गिफ्ट करते हैं, फादर उसमें डालते हैं. दिस इज समथिंग व्हिच एवरीवन नोस और डोंट नो. देन आई रिपीट इट. बताओ, पता है आप लोगों को सबको? नहीं, बहुत जन को नहीं पता. मैं बता रिवोकेशन का कॉन्सेप्ट. सो देखिए, अगर मैं एक ट्रस्ट बनाता हूँ और उसमें अपने आप को बेनिफिशियरी बना देता हूँ तो क्या हुआ फिर? मतलब सेटलर एंड बेनिफिशियरी का से तो मैं लेफ्ट पॉकेट से राइट पॉकेट में पैसे रख दिए. सो इंटरेस्टिंगली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको उस एसेट को आपकी फाइल में एसेस करता रहेगा, ट्रस्ट की फाइल में एसेस नहीं करता. बिकॉज अगर इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट मैंने उस पर लिख दिया दिस इज अ इररिवोकेबल ट्रस्ट, सो इंडियन ट्रस्ट एक्ट में वो इररिवोकेबल माना जाएगा, इनकम टैक्स एक्ट में रिवोकेबल माना जाएगा. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलते हैं लेट द इंडियन ट्रस्ट एक्ट गो टू द डस्टबिन, आई विल ट्रीट इट एज रिवोकेबल, आई विल कंटिन्यू टू ट्रीट इट इन योर फाइल, एवरीथिंग व्हिच हैज बीन सेटल्ड. सो सेटलर की फाइल में ही वो एसेस होता रहेगा. हाँ, जो भी मैंने डाला है सेटलर तो एक ही है सर. नहीं सर, मैं सर डिफाइन तो मैं किसी और के लिए तो नहीं. आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट. देखिए, इन रियल लाइफ वर्ल्ड में आई टेल यू पीपल डू डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट बिकॉज इट गिव्स यू रिंग फेंसिंग एंड मेनी अदर बेनिफिट्स. द रियल वर्ल्ड डज डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट. सो डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में अगर आप खुद डालते हो सो वो खुद ही बेनिफिशियरी, वन ऑफ द बेनिफिशियरीज भी हो, सो उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मानता है रिवोकेबल ट्रस्ट. इवन दो आपने लिख दिया इट इज इररिवोकेबल. फॉर इंडियन ट्रस्ट एक्ट इट विल बी ट्रीटेड एज अ इररिवोकेबल, बट फॉर इनकम टैक्स एक्ट इट इज रिवोकेबल. Should not be, otherwise income tax will keep continuing assessing in your file. हाँ, ट्रस्टी तो बस बैठा रह जाएगा, उसके फाइल में होगा ही नहीं, वो तो वैसे भी रिप्रेजेंटेटिव. हाँ, ट्रस्टी कैन बी बेनिफिशियरी, ट्रस्टी कैन बी बेनिफिशियरी, नो प्रॉब्लम. The settler and the beneficiary should not be there. The settler should not be the beneficiary. If the settler is the beneficiary, the income tax department will assess it in the settler's file only. Yes, very much. होता ही है, प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए होता ही है. जब फादर डालता है अपने वाइफ और बच्चों के लिए, वही ट्रस्टी बन जाता है, उसको कंट्रोल चाहिए एसेट पे. What about insider trading? You are doing it between the promoters. You are not certain with sensitive information that you have to be careful about the insider trading regulations as well. I agree, but these are exemptions which are given. So you can do it with immediate promoters. Like bill is accepted, succession is accepted under the code. But this is not either will not succession. So I have a question. No. So I have a question. If I am transferring to immediate relative, where is the insider trading? This is between two relatives, right?
and it is between two promoters. There is no insider trading here. That's exempted. These two are exempted, clearly exempted. Outside. Now I'll tell you practical purposes के लिए. हाँ बोलिए please. So generally लाइफ में क्या करते हैं लोग, अपने फादर को, मैं अपने फादर को गिफ्ट करूंगा, और ट्रस्ट में हमने क्या सीखा है, लीनियंट डिसेंडेंट्स कैन बी द बेनिफिशियरी. सो मेरे फादर जो कंट्रीब्यूट करेंगे ट्रस्ट, उसमें मैं भी बेनिफिशियरी बन जाता हूँ, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, पोते सब बन सकते हैं बेनिफिशियरी. करेक्ट, ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, बट सेबी आ जाता है पिक्चर में. सो माई फादर इज माई इमीडिएट रिलेटिव, एग्जेम्पशन है, मैंने ट्रांसफर कर दिया. बट एक और क्लॉज है कि मैं जब उनको देता हूँ वो 6 महीने तक आगे नहीं दे सकते किसी को. ये रिस्ट्रिक्शन आ गया. सो मैं जब ट्रस्ट का, अगर आज मैं सोचता हूँ कि मैं ट्रस्ट में मुझे डालना है, तो पहले मैं अपने फादर को गिफ्ट करता हूँ और 6 महीना बैठ जाता हूँ. फिर 6-7 महीना बीत जाता है, फिर मेरे फादर एप्लीकेशन डालते हैं कि भाई मेरे को डालना है फॉर द बेनिफिट ऑफ माई सन, माई डॉटर इन लॉ, माई वाइफ एंड देन ऑल ऑफ दैट. सो ये 6 मंथ्स का क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सर, 2 questions here. और एक चीज कंप्लीट कर. हाँ सर प्लीज. एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है सेबी ICDR रेगुलेशंस जो लिस्टिंग के लिए जाते हैं. जो मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप IPO में जो भी शेयर्स आप डाइल्यूट करते हो, इट शुड हैव बीन हेल्ड फॉर 12 मंथ्स, राइट. IPO आ रहा है 3 महीने में, मेरे पास दौड़ के आते हैं, अरे सेबी में चलेगा तो अप्रूवल प्रोसेस चला जाएगा, 12 महीना लग जाएगा. हम बोला हाँ सर लगेगा. फिर साथ ही साथ में आप लिस्ट कराने के बाद में आप पहले फादर को ट्रांसफर करोगे, वो 6-8 महीना गया. फिर फादर उसको सेबी का अप्रूवल जाएगा, वो 12 महीने गया. तो 18 महीने से तो पहले हुआ नहीं, राइट. बोला अच्छा. फिर बोलते हैं आप एक काम करते हैं, फटाफट हम ट्रस्ट बना के, आज मैं फादर बिफोर आई फाइल फॉर द DRHP, मैं फटाफट जाके फादर को गिफ्ट कर देता हूँ और फादर आज ही ट्रस्ट में डाल देते हैं बिफोर आई फाइल द DRHP. मतलब वेरी ट्रू सर, गुड. और फिर मैं अगले महीने DRHP फाइल करूँगा, 4-5 महीने में लिस्ट होता हूँ. इसमें एक क्लॉज है कि जो भी आप डाइल्यूट करोगे शेयर्स, वो मिनिमम 12 महीना तो होना चाहिए. सो मैंने फादर को गिफ्ट किया, ठीक है, ये आज गिफ्ट किया, फादर ने कल ही ट्रस्ट में डाल दिया, पर वो जो शेयर्स जो डाइल्यूट होंगे, जो ट्रस्ट में पड़े, वो 12 महीने उनको होल्ड करना पड़ेगा, नहीं तो IPO में डाइल्यूट ही नहीं कर पाएंगे. सो दीज आर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स व्हिच यू फेस. आपका क्वेश्चन फिर वो रखेगा ना, प्रैक्टिकल भी रहता है. फिर जो अपने पास जितना, फिर क्या होता है, आपको अगर 10% डाइल्यूट करना है तो आप 90% डाल दो ट्रस्ट में, 10% हाथ में. Sir, this scheme is generally done for ring fencing most of the time. Now, if you give Ring fencing to father, ring fencing for outside liabilities, creditors, or any other liabilities. My experience has been 80% of the case, the whole family only. Outside world में थोड़ी family. But किसी से भी, मेरे को छोड़ करके बाहर से किसी से भी, right? हाँ जी. So, if I make this transaction, I am giving to my father, then making father as settlor and I becoming the one of the beneficiary. Don't you think this is a bypass of this and this can be, कौन सा है? गार है. सेबी में कोई गार नहीं है. सेबी में कोई गार नहीं है. नहीं. देखिए, इनकम टैक्स एक्ट में क्या बोलेगा? भाई एक्ट में तो लिखा ही हुआ है फादर को देना एग्जेम्प्ट है. एक्ट में तो सब लिखा ही हुआ है. मैं सारी चीज जो कर रहा हूँ किस लिए कर रहा हूँ? सो कोई ऐसा, और वर्स्ट का वर्स्ट होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, नहीं मैं तुम्हारे फाइल में एसेस, क्या पालेगा मेरे फाइल में एसेस करके, बताइए. मतलब व्हाट विल ही अचीव, व्हाट विल द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अचीव बाय सेइंग नो यू पुट इट from the income tax perspective. Say suppose कल को कोई बैंक लोन का इशू, IBC का क्वेश्चन आपने कवर किया है. IBC का 2 साल का लुक बैक पीरियड है, सबको पता है. और पर्सनल गारंटीज का भी नया कल परसों ही आया है. हॉट केक की तरह डिस्क्लोजर्स देना पड़ेगा, कल परसों आया है. सो अभी आया है परसों कि अब अगर आपकी पर्सनल गारंटीज दी हुई है, सो अब आपको ये डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा कहाँ ट्रस्टी और बेनिफिशियरी, जो कि अभी तक देना है. सो अभी तक पर्सनल गारंटी में क्या होता है, आपकी अपनी बुक्स में जो दिख रहा है फाइल में, सिर्फ वो देना है. परसों ही आया है कि भाई अब पर्सनल गारंटी अगर दी है तो आपको ये डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा कि आप ट्रस्टी भी हो और बेनिफिशियरी भी हो. बट एक चीज है, प्लीज बी माइंडफुल, इट इज ओनली अ डिस्क्लोजर. कॉन्ट्रैक्चुअली इन इंडिया अगर वो लुक बैक पीरियड आप पार कर गए, बोनाफाइड दिखा दियो, तो हाथ भी नहीं लगा सकता कोई. अनिल अंबानी इज द बिगेस्ट केस.
हाथ नहीं लगा पा रहे। ये statutory है। Statutory है। क्या बोले? ऐसे मानिए ना 5 years. सर ये बोल रहे हैं IBC में 5 years. अरे कहाँ? 2 years for relatives, sir. 2 years. परसों जो है, परसों में नहीं। I'm sorry, I'm not ready. मुझे नहीं पता। 5 साल नहीं हो सकता सर। 5 साल। आरपी का क्या पावर है? आरपी का क्या पावर है? वो लुक बैक करे तो कोर्ट लुक बैक करने का बोले। ट्रांजैक्शंस के लिए बोल सकते हैं 5 साल तक। आई डोंट थिंक सो कि ट्रांसफर ऑफ एसेट्स फ्रॉम अ पर्सनल फाइल आरपी का Maybe the look back That is period when is RP when come you into the make picture. the transaction void. For that, currently it is 2 years for relatives and 1 year for non-relatives. So it is when you making the transaction void. I think what you are saying is that maybe they can look into the genuinity of the transaction. For that, वो अलग चीज है। 5 साल तो कभी नहीं हो सकता। 5 साल is too much a business cycle. I don't think so. Also, second question is relating to deemed revocation clause. If settler becomes one of the beneficiaries. Now, many a times we see that the family members This is also income tax cycle. This is income tax. Many times we see that the family members also want to contribute to the corpus, and they are the beneficiary. So, my question is whether this act of contributing to the trust, when they are not the settler, but then they are the family members and they are contributing to the trust corpus, whether the entire trust corpus will be subject to this So, revocation contribution you need. So, what is happening? The trust will continue. You can treat it as an irrevocable trust. But in income tax, what you have contributed, the income tax officer will be treating it as it's not been that portion, only that portion. So, आपका जो objective है income tax में, वो see इसमें एक चीज बताऊँ. When I say income tax, yeah. So his question was that when I am a settler of a trust and I contribute it for my wife, my 2 children, my father, my mother, and I also make myself a beneficiary in that. So in Indian Trust Act, and I put explicitly bold letters, this is an irrevocable trust. So Indian Trust Act and all other acts will treat it as an irrevocable trust. So you want a ring fencing under anything, you will get it. Only for income tax purposes, and when I say income tax, I will presume that when inheritance tax comes at some point of time, it will be also considered for inheritance tax also, that for these 2 laws, it will be deemed to be continuing to be in your file, not in the file of the trust. But sir, ring fencing is the When I said Indian Trust Act, तो बाकी laws में ring fencing कर जाएगा। सर सिर्फ हमारे income tax में हम क्या करें? मतलब मैं आपकी सब कर देंगे। चलिए चलिए sorry. But you found the conversation interesting now. बस ठीक है, let's continue. So let us rush through it. So the 661, whether provisions of section 92(2)(m) 56 to 10 will be attracted with respect of amount property transferred by individual settler to an irrevocable. तो आ गया सर, बोल चुका हूँ इसको, ये हो चुका। ये तो हो गया इसमें। मैंने एक्सप्लेन ही कर दिया ऑलरेडी। इसमें पॉइंट ऑफ टैक्सेशन वाला पॉइंट एक अच्छा पॉइंट। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन? क्या चीज इसमें सर थोड़ा सा डायमेंशंस है। सेटलमेंट के टाइम पे ही हो जाएगा आपका। सर स्पेसिफिक ट्रस्ट के केस में पॉइंट ऑफ टैक्सेशन कब आएगा? डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट के केस में पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। तो देखिए स्पेसिफिक ट्रस्ट में तो टेक्निकली ये प्रॉब्लम जो है ना तो डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट की है। स्पेसिफिक ट्रस्ट की कैसे करूँ? स्पेसिफिक जो इंडिविजुअल है मेरा रिलेटिव है, क्वेरी है। नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें क्वेश्चन क्या कि अगर रिलेटिव नहीं है ना, यही है ना क्या है? इसमें सर नहीं है तो उस केस के अंदर में 56 to 10 पे आपको मिलेगा का वाला तो है। सोलने नहीं टैक्स कब लगेगा? इन केस ऑफ स्पेसिफिक So settlement- स्पेसिफिक ट्रस्ट कब लगेगा? इन केस ऑफ डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट कब लगेगा? देखिए मैं डिस्क्रिशनरी का मैंने देखा है वो सेटलमेंट के टाइम में लग जाएगा। जब डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं सेटलमेंट बट ट्रांजैक्शन तो कोई कंसेप्ट है ना ऑन बिहाफ ऑफ एंड फॉर द ट्रांजैक्शन एट द जंक्चर ही टैक्सेबल है, एकदम एट द जंक्चर पॉसिबल आर्गुमेंट है, पॉसिबल आर्गुमेंट। बट देखिए मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ, मैं क्लियरली आपका ट्रस्ट ही देखूंगा, बेनिफिशियरी देखूंगा, सोली नहीं है, इमीडिएटली बोलूंगा ट्रांसफर ही टैक्स। लिटिगेशन में तो आज लगेगा ही, पता ही है
देखिए स्पेसिफिक में अगर एक इंटरेस्टिंग चीज हो सकता है, 4 बेनिफिशियरी है, 3 रिश्तेदार है, 1 रिश्तेदार नहीं, तब क्या करोगे? तब तो टैक्स लग गया ना। नहीं, स्पेसिफिक है, उसका पोर्शन पे उसके portion पे लगेगा। रिलेटिव नहीं, पर सर पॉइंट ऑफ टैक्सेशन का चैलेंज आ रहा है इन केस ऑफ डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी में यू आर सेइंग कि एज एंड व्हेन इट विल बी सेटल्ड See, at the juncture, at the point of contribution only, नहीं मैं बताता हूँ, question 6. So, क्या हो रहा है कि I am settling assets in a trust, one of them is a non-relative, right? So, will the point of taxation happen at the point of contribution only or settlement only, or will it happen at the point of distribution, right? So, if it is an irrevocable discretionary trust, my view is completely at the point of contribution only the tax event is. डिस्क्रिशनरी Yes, at the point. उसमें अगर तो राइट है लेकिन कोई नहीं सर, फिर तो बाकी वाला भी ले लीजिए आप, उसमें वो रूलिंग ले, उसका विड्रॉ जरूर कर लिया बैकलॉग. सो देयर वाज अ रूलिंग, दैट हैज आई एम सॉरी, नो, सो डिस्क्रिशनरी में पूरा ही हो जाएगा, डिस्क्रिशनरी में पूरा ही हो जाएगा. स्पेसिफिक में आप तब भी आर्ग्यूमेंट ले सकते हो कि बिकॉज मेरे जो स्पेसिफिक बेनिफिशियरीज हैं वो रिलेटिव्स हैं, उसको छोड़ दो, पर जहाँ पे रिलेटिव्स नहीं है उस पर टैक्स लगा. यू कैन टेक दैट आर्ग्यूमेंट एंड टेस्ट waters, बट विद अ डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट, इवन इफ leave aside relative, non-relative, leave aside charitable institution also, leave aside, that's what this ruling which came, it is such a bad ruling, it has brought something to surface, it had to be withdrawn on the instructions of this president of the ITAT, it had to be withdrawn. कि उसने बोला कि अगर आपने थॉट भी मेंशन कर दिया है, थॉट कि मैं कर सकता हूँ, उस पे भी टैक्सेबिलिटी होगी. Next on the thoughts of So again, that ruling has been withdrawn. So you can say that it is not there, but I'm saying be careful on that. Just don't have non-relatives as beneficiary. Don't mention or don't put it also in the document. At least after that ruling, that is a cardinal principle we have followed. So, sir, now my follow-up question on this is, in case of discretionary trust, you are saying, as and when it is settled, Basis that ruling now. how? If I remove the ruling aside, If we assume that at the time when you settle to the trust, it will be taxed, okay? Then ultimately when it will be distributed to the beneficiary. Then again it will be taxed. Then it will be exempted. सर बोले ना को बेनिफिशियरी पर तो टैक्स लग नहीं रहा है. नहीं. So सबसे पहले नहीं, so उसमें कोआदी बेनिफिशियरी आपको देखना पड़ेगा, किस बेनिफिशियरी को जा रहा है. जिस बेनिफिशियरी को जा रहा है, तो रिलेटिव आ रहा है तो उसको तो नहीं लगेगा, जो नॉन रिलेटिव उसी के लिए उसको तो लगेगा, डबल टैक्स हो रहा है. लगेगा. अच्छा एक चीज बताइए सर, एक चीज बताइए, सबसे पूछता हूँ, इस ट्रस्ट को हटा दीजिए, ट्रस्ट को हटा दीजिए, मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे भी टैक्स लग रहा है, आपको भी लग रहा है कि नहीं लग रहा? एग्जाम्पल लगता है. एग्जाम्पल फीस को लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा. हाँ, ये गिफ्ट है ना, क्योंकि नेचुरल चल रही है, नेचुरल पर्सन. Either the point of taxation should be either at the time of settlement or at the time of See, discharge. I'll tell you, with respect to लेकिन purpose of composed of initial settlement amount plus income also. इनकम पे तो टैक्स दे रहा है, इनकम पे तो टैक्स दे रहा है सर. टैक्स तो पूरे ट्रस्ट टैक्स देता है. इनिशियल कॉर्पस जो I think the participants are telling. I think, sir, in my humble opinion, what we should do is that I think let sir complete the questions and let us not maybe interact in between and sir complete. I think. Okay. Because, sir, आप questions करिए. कोई अगर question के So question 6, there are two views. When you settle, whether the taxability will be there, whether when you distribute, will the taxability will be there. I have a conservative view that when you settle and there is a non-relative beneficiary in a discretionary trust, the taxability will come. Because the act is saying the provision shall not apply to any sum of money from an individual by a trust created, established solely for the benefit. So it is talking about the time of contribution solely for the benefit. So therefore, I have a belief that at the time of settlement only, it's a non-taxable transfer. It's a taxable transfer. Yes. So specific is you're identifying it towards a particular beneficiary. So where it is not a relative, it should be taxable only in that. Question 6 done. 7. What is it?
हाँ will से तो सब एक्सेप्ट will से आप किसी को भी दे सकते हो. The next question, whether in case of interest where beneficiaries are determinate, but discretion is given to the trustees to decide the share of a beneficiary income every year, or the right is given to the beneficiaries to exercise option every year to receive the income or not. The trust would be whether the trust would be treated as a discretionary trust or as a specific trust. It is about the nature of the trust. So whether there are some discretion to the trustees, there are some discretion to the beneficiaries. So how it will be defined, whether it is a specific trust or it is a discretionary. I think the answer is very simple, lies in the section itself. So if you go to section 164 of the Act, explanation 1, this section provides that income is deemed not to be specifically receivable and shares are deemed indeterminate unless both the following conditions are satisfied. Condition 1, the beneficiaries are expressly named in the instrument and identifiable. Second, the individual shares are expressly stated in the instrument and ascertainable as such on the date of the deed. Now if I break this, I'll break it into two limbs. Limb 1, where the trustees decide beneficiary share in income each year. In case, since the shares of the beneficiary are not expressly stated in the instrument and ascertainable as such on the date of the deed, condition 2 is not satisfied. What was condition 2? Clear? Shares are not, and therefore the trust shall be treated as a discretionary for income tax purposes. Next question. Next question. I don't think anybody can hear. Is it possible to initially create a discretionary trust which is converted to a specific trust later on upon happening of a certain event in later years? First limb is that. Second limb is whether for income tax purposes the same will also be converted to a specific trust upon such conversion in later years. What will be the position in the situation? Whether this is the interchanging of the status is possible or not? Yes, it is possible. Through a built-in shifting clause in the original trust deed. It is possible. In such cases, conversions occurs by operation of the original trust deed itself and ordinarily does not require any further amendment, consent or supplement instrument. So it's there that on this trigger, it will change its color. It is there in the original trust deed. Very much possible. Now, is there any other mechanism? Through a subsequent amendment in the trust deed, where the original trust deed explicitly reserves the power of amendment, the trust may potentially be restructured to a deed of amendment in accordance with the reserved power. So there is a power given to the trustee, you can do it. You'll have to make that amendment, not necessarily get it notarized, and then make this amendment. Now, what are the income tax consequences? Conversion from a discretionary to a specific trust. So tell me, in a discretionary, was the beneficial owner of any of the beneficiary, the extent of beneficial interest of any of the beneficiary decided? वो डिसाइड हुआ ही नहीं था, तो कुछ हुआ नहीं, कुछ किसी का तो कुछ गया ही नहीं, उल्टा क्या हो गया, उसका स्पेसिफाइड हो गया. इट इज लाइक अ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. 100 रुपए पड़े थे ट्रस्ट में, डिस्क्रिशनरी था. मैंने बोला 5 जन बैठे, पांचों के 20-20 है. वो तो वैसे भी ट्रस्ट डीड में लिखा होता कि वो डिस्ट्रीब्यूट करता 20-20, उससे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करके बाइफोकेट कर दिया. So there is nothing which is an issue out here. It is nothing. It's something like you have done a distribution of assets, but keep the money still in that trust. But in future also, future that you have distributed, but I am earning in future also. Then in future, what will be the status? That is the question. Many times we see After- trust when the settler says, till the time I am alive, I will decide how much I will give. Exactly, sir. But after my death, the beneficiaries who are there Divide equal. will be equally divided. Done. So till the time he is alive, it is a discretionary. Yes, Post that, it becomes a specific. specific. That is So there is no problem in that. Anyone sees a problem in that? मतलब 100 रुपया पड़ा था, 5 जन का है, किसका क्या है, कितना अमाउंट डिसाइडेड नहीं है. एक आदमी के डेट ट्रिगर ने, सेटलर के डेट ने ट्रिगर कर दिया, पांचों का 20-20 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट इज एज गुड एज अ डिस्ट्रीब्यूशन. सो देयर इज नो इनकम टैक्स इशू. but for future years, income of the future. But it's a specified trust now. To behave like a specified, pay returns like a specified. इसका opposite भी possible है sir. हाँ सर, उसमें आएंगे सर, मजा वहीं पे है. तो ये तो सिंपलर वाला था.
Okay, Reverse question. reverse question. What are the consequences when the reverse happens? अब reverse में देखिए थोड़ा challenge है. 5 जन है, 5 को 20 बोला गया. Suddenly बोलते हैं भाई अब तुम्हारा पता नहीं है कितना बोलेगा. So has someone relinquished his rights? I was owner of 20. Not necessarily 20 can become 30 also. No, but some for अच्छा 20, 30 हुआ, but किसी का 20 to 10 हुआ ना. But this specific का वही I am with you, sir. I am with you. I am with you. But is it a taxable event? फिर साथ ही साथ में देखिए, सर हम लोग को 2 चीजें हैं, देने वाला एक लेने वाला. The person who is receiving it also 56. क्या है आप लोग का मत क्या है? सर मेरा कभी डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं मतलब यहाँ फ्यूचर ईयर्स आल्सो बिकॉज़ ट्रस्ट इज कंटिन्यूस. तो डिस्क्रिशनरी हो गया सर. मतलब हो जाएगा क्या? इज पॉसिबल. लीगली पॉसिबल है सर. इफ इट इज प्रोवाइडेड इन द डीड सर. टैक्स No, देंगे no. तो सभी हो जाएगा, टैक्स बचेगा नहीं बचेगा. इज इट? सो डिस्क्रिशनरी होते हैं हम क्या टैक्स रेट हो जाता है हमारा MMR. इनको तो फिर चेंज. बट मेरा तो उसमें MMR उसमें इतना टेंशन नहीं है. मेरा टेंशन ज्यादा है कि भाई 56 to 10 तो नहीं लग जा रहा. मैं तो 20 का ओनर था, मैं तो पता नहीं क्या हो गया. अगर बेनिफिशियरी रिलेटिव है नहीं लगे. चलिए मैं Next आपको question. नहीं यार मैं तो क्लाइमैक्स बना रहा था. ओके लेट मी रीड. सो section 50D requires that there should be a consideration receiving or accruing as a result of transfer of capital asset. In the instant case, one can contend that since no consideration would be received or accrued to the transferor, the provision of 50D shall not apply. Therefore, the full value of consideration of capital gains. So you cannot determine the value only. And we have many rulings where you cannot determine the value, the mechanism fails, therefore no tax. Now coming to 56 to 10. What is the answer to that? Why that will not apply? The argument plausible that beneficial interest does not fall within the definition of property under 56 to 10. So जो change हुआ है वो asset नहीं, beneficial interest से change हुआ है. Right? If beneficial interest has changed interest से, beneficial interest doesn't fall in the definition of property under 56 to 10. So you can take that argument because I have a hunch. If I was an officer, I would have really hauled you under both these sections. So I need to have my answers ready and I have my answers. Next question. Next question is whether a specific trust shall remain as such even if there is provision in the trust deed for variation in the beneficial interest in the trust due to birth, demise or marriage etc. of family member, and where manner of computation of beneficial interest of each beneficiary upon such variation is provided in the trust deed. Yes, the trust remains a determinate trust, provided 2 things only. The variation operates by a mechanism or a formula set out in the deed itself. First, and no discretion is left to the trustee or anyone else to decide. If these are the 2 things, it remains a determinate trust. And so it means the conditions of explanation 1 of 164. See, what is critical out here is ascertainability and not constancy while analyzing whether the trust is specific or not. So, आप ascertain कर पा रहे हो वो important है. वो तो आप कर ही रहे हो, फॉर्मूला भी दिया हुआ है और कोई वेरिएशन नहीं. So it remains specific and determinate. Next. This is also on year-on-year basis. Whether this year. Every year. You actually do a testing every year. Next. Next question is ये हम cover कर लिए. अच्छा बोले. Question number 10. whether the amount or assets distributed to beneficiary during the subsistence of trust or at the time of dissolution of trust would be taxable in the hands of beneficiary. I've explained.
इसमें एक चीज मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि 56/10 में दो आर्ग्यूमेंट रहते हैं. एक है जो मैंने आपको बोला कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में, सेकंड है पास थ्रू स्टेटस की, बट दीज आर टू आर्ग्यूमेंट्स. इट्स ऑल जजमेंट में ऐसा कोई आर्गुमेंट था कि his own beneficial interest which is crystallizing in the form of assets. So There is they're separate persons like that. they are not two separate persons. Next question is whether any direction by settlor for allocation of certain percentage of income for charity and will distribute the residue for benefit of relatives would make the trust as not related solely. ये तो discuss Discuss. ये रूलिंग जरूर पढ़िएगा. ऑल्दो बाकी द बाकी ट्रस्ट रूलिंग आईटीटी बैंगलोर की है. बेस्ट पार्ट है रूलिंग आई है और विड्रॉ हुई. पर सर क्या इसमें हम पूरे मार्केट को हिला दिया. सर इसमें मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि 56/10 का प्रोविजन में आप देखेंगे कि द एनी एलोकेशन टू द चैरिटी आल्सो एग्जाम. if a charitable trust receive any money, it is exempt in the annex of the charitable trust. 56/10 is not applicable. So can we say that beneficiaries as well as charitable trusts who are receiving, who are becoming beneficiaries, 56/10 should not be applied to this trust? I will not. Very obvious. नहीं चलेगा. देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो मैंने एक मैकेनिज्म बताया, फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि ट्रस्ट डीड में ये डलवा रहा हूँ जितना वो ट्रस्ट डीड में यू कैन पुट वन थिंग कि if the trust is going to earn 10 rupees out of principal of 100 rupees, 2 rupees will be used for charity. So it is not distribution. It is application of income. Basically, after that, whatever is net, that will be distributed. So it is application of income. So smartly, if I want to do whatever earnings are coming every year, I can put a part to charity, but then that will not fall in distribution, it will fall in application. वो आप कर सकते हो. बट सर इसको एक इनडायरेक्ट मैथडोलॉजी आपने बताई कि फादर से दिया इधर दे दिया. यदि आज हम देखें, आज की डेट में यदि हम किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दें तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को 56/10 नहीं लगता है. आज की डेट में हम रिलेटिव को गिफ्ट दें तो 56/10 नहीं लगता है. वही चीज़ हम ट्रस्ट के थ्रू कर रहे हैं. Not solely for related महामार्ग. मैं मान लिया सर, लेकिन उसके नीचे में आएंगे तो आप देखेंगे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को भी एग्जाम कर रहा है. कैन वी टेक अ रीडिंग टू डिफरेंट two different points? आप सोली को सोली पढ़ा. Just trying to explain. वो बाकी का ऑर्डर पड़ेगा ना, वो सोली को इतना प्यार से पढ़ा है उसने. सर वो तो विड्रॉ हो गया सर. So withdraw हुआ, but believe me, it has left ripples in the market. So बाकी trust ruling. ITT Bangalore. Come again. So whatever income you get, you pay taxes on it, then you do the application. It's not, you don't get a deduction for it. Definitely not. Next question is whether the entire income of a private specific trust from whatever source of income is taxable at FEMA, business income ownership. Yes, entire income. There is no point of keeping business either दो अलग-अलग separate बना. मैं इसका legislative intent बोल सकता हूँ. So the legislative intent behind this provision is to prevent the use of trust structure as a means of reducing tax burden on business income by distributing such income among the beneficiaries who may otherwise be subject to low tax rates. The anti-avoidance objective has been recognized in the judicial precedents interpreting 161 to 164, specifically mentioning the Supreme Court ruling of CIT versus Kamalani Khatu of 1994. Next question is issues under FEMA. The residential status, transfer of assets, whether the income will be taxable if beneficiaries are outside India, multiple issues which FEMA. Gentlemen, better NRI से deal करते हैं. So okay. So some basic principles I want to first clear, and please add to it if I'm missing on something. So if I have someone outside India, my relative outside India, or non-relative also technically I can give. But if I have a relative outside, what is the amount I can give? $250,000. LRS limit, very clear. Now this gentleman, if he's got money in his NRO account, how much money can he take out? 1 million. Yes. ये दो चीज पता है. So मैं अगर दे रहा हूँ बाहर में किसी को, LRS FEMA बोलता है तुम $2.5 लाख दे सकते हो.
उसके अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर है, वो इंडिया से कितने पैसे निकाल के ले जा सकता है एक साल में? 1 बिलियन। सो मैं काम करता हूँ, उसके इंडियन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ, वो निकाल के ले जाए 1 बिलियन। तो क्या होगा, मैं उसके इंडियन बैंक अकाउंट में रख सकता है। एनआरओ नहीं है, करेक्ट। ये चीज याद रखिए, ये इतना ग्रॉस वायलेशन इंडिया में हो रहा है ना, इतना ग्रॉस वायलेशन में मैं क्या बताऊं। देन हाँ पकड़ में नहीं आ रही। एक्चुअली फ्रैंकली बताओ आपको, नहीं ऐसा नहीं है, आप ठीक बोल रहे हो, ठीक बोल, क्योंकि बैंक वो तो इसलिए वो रडार में नहीं आ रहा। सर क्वेश्चन टाइम खत्म है। अरे अब मैं और पूछता हूँ, मेरे पास आई हैव शेयर्स ऑफ माय कंपनी 100% इक्विटी, माय सन इज इन दुबई, ही से आई एम नॉट टू कम बैक, एंड मेरी कंपनी का मार्केट कैप है, मतलब लिस्टेड या अनलिस्टेड है, नॉन लिस्टेड डील है, 200 करोड़ का है, और मैं अपने सन को शेयर्स देना चाहता हूँ। मैं शेयर्स दे सकता हूँ? दे सकता हूँ ना? I can give shares to my son who's in Dubai. God. Come again? LRS cash के लिए. LRS is only cash. NDI regulations आएंगे इसमें. NDI. So rule 9 of NDI regulations. Yes, NDI. ये आरबीआई के रेगुलेशन है। अब पीआरआई होल्डिंग इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इज पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, होल्डिंग इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स मे गिफ्ट टू एनआरआई रिलेटिव ओनली विद प्रायर आरबीआई अप्रूवल, सब्जेक्ट टू अ कैप ऑफ 5% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी, अच्छा है, एंड एन ओवरऑल मॉनेटरी लिमिट ऑफ $50,000। क्या होता है बताइए? मतलब 50,000 वैल्यू के शेयर्स। ये आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडियन प्रमोटर्स का, जिनके बच्चे सेटल हो गए बाहर, उनको अपने बच्चों को शेयर्स गिफ्ट नहीं कर पा रहे। उसके लिए क्या करना होता है आपको पता है? उसको बुलाते हैं, 2 साल आओ, इंडियन रेजिडेंट बनाओ, शेयर्स ट्रांसफर किया तुमको, तुम वापस चले जाओ, या फिर चलो मैं आके तुम्हारे पास 2-3 साल रहता हूँ, मैं नॉन रेजिडेंट बनता हूँ, बिकॉज एनआर टू एनआर में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आर टू आर में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आर टू एनआर में रिस्ट्रिक्शन है। So shares is the biggest problem in the country. हाँ जी सर, आपके पास भी बहुत शेयर है। ओके, सो देखिए मैंने अब एक और सिनारियो, मेरा बेटा बैठा है यूएस में, मैं उसको $2.5 लाख की नीचे की प्रॉपर्टी गिफ्ट करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? प्रॉपर्टी बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी सर, इंडिया में मैं गिफ्ट करना चाहता हूँ, $2.5 लाख तक की कर सकता हूँ, $5 लाख की कर सकता हूँ, $10 लाख की कर सकता हूँ, 500 करोड़ की कर सकता हूँ। यस, 500 करोड़ की आज की तारीख में जो रिपैट्रिएशन करना है 1 मिलियन है, हाँ प्रॉपर्टी जाएगी नहीं, बट एक बात है, वो जो प्रॉपर्टी बिकेगी ना, वो 1 मिलियन करके एनआरओ में निकलता जाएगा। सो लोग क्या कर रहे हैं, बस स्टैम्प ड्यूटी का इफेक्ट प्रॉब्लम है, क्योंकि वो ट्रांसफर में भी थैंकफुली बंगाल में स्टैम्प ड्यूटी कम है। सो बंगाल में अगर आप लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वो 7% तो लग गया, 8% लग गया, फिर अपने बच्चा जो यूएस में बैठा है उसको 100 करोड़ की प्रॉपर्टी गिफ्ट कर देते हैं। थैंकफुली बंगाल में एटलीस्ट स्टैम्प ड्यूटी कम, 1000 है, अभी 1000 कर दिया, 1% प्लस रजिस्ट्रेशन, वो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट बट स्टैम्प ड्यूटी 1000 पहले हाफ प्लस 1 था, नाउ इट हैज बीन। अच्छा चलिए 1% है भाई, 1%। सो फिर उसको दे दिया और वो उसको बेचता है और फिर उसके बाद में 1 मिलियन निकाल के ले जाता है। वेरी गुड प्लानिंग। इमूवेबल कुछ नहीं,
Repatriation. रिपार्टिशन क्या है? पर प्रॉपर्टी देने में नहीं है. Residential property. हाँ? नहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सर. Repatriation on the sale of property by another. Is there a repatriation limit of 1 million. बट मैंने ट्रांसफर तो कर दिया. आज की तारीख में इंडिया में फैमिली सेटलमेंट्स हो रहे हैं. एक बेटा यहाँ बैठा है, एक बेटा वहाँ बैठा है. वो बोला मैं आऊंगा नहीं, ना मैं शेयर दे सकता हूँ, ना मैं LRS दे सकता हूँ. मैं दूं तो उस बच्चे को दूं कैसे? प्रॉपर्टी खरीद के दे दो. अगर समझी 200 करोड़ है, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद के उसको दे दो, 100 करोड़ की उसको लोकल बच्चे को दे दो. So see these principles, why did I speak? Because they squarely apply. You know why did I speak these principles? ये तो मैंने इंडिविजुअल इंडिविजुअल, यहाँ पे ट्रस्ट का ही नहीं. बिकॉज ट्रस्ट में ये सेम प्रिंसिपल्स बैंकर्स चेक करते हैं. जब आप ट्रस्ट में कंट्रीब्यूट करते हो तो हैप्पीली आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो. दो व्यू है कि आप कंट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते ये सब चीजें. सर यहाँ पे फेमा के जो इश्यूज हैं क्वेश्चंस में is taxability in India in case आई गई वैसे. और कोई स्पेसिफिक इशू है? नहीं ठीक है फिर आगे बनना सर, इसका मैं कोई स्पेसिफिक इशू है? फेमा में बस एक ही चीज समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप बस इसको बीच में ट्रस्ट डालिए. ये सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं. So all these restrictions apply, which is so if you apply a trust out here, all these restrictions also. That's it. impact of IBC on beneficiaries share in एक चीज मैं और बोलूँ थोड़ा सा, मैं क्लियर कर देता हूँ कि I will say that whenever you are dealing with FEMA, ट्रस्ट को हटा के जैसे आप डील करते हैं वैसे डील करें. सो इसका मतलब है अ फादर अपने विल में लिख के जाता है कि मेरे 100 करोड़ के शेयर्स मेरे US वाले बच्चे को मिल जाएंगे. लिख के जाता है विल. अभी मैंने क्या बोला, शेयर्स $50,000 ऊपर के दे नहीं सकते, पर विल जब आता है तब जा सकता है. तो इसमें क्या प्रिंसिपल है कि आप ट्रस्ट में डाल दो पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब तक सेटलर जिंदा है तब तक वो $50,000 का प्रिंसिपल फॉलो करो. जिस दिन सेटलर गया उस दिन आप पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते. सो बैंकर्स भी यही कर रहे हैं कि आप ट्रस्ट में इज अ पास थ्रू व्हीकल. जो आप डायरेक्टली जो कर सकते थे मैं वो ही आपको करने दूंगा. बस मैं इतना करने दूंगा, आपको एक बॉक्स में रखने दूंगा क्योंकि मैं लिटिगेशन रिड्यूस कर देता हूँ. बट प्लीज अप्रिशिएट, ट्रस्ट में डालने से आपके US के अलग रैमिफिकेशंस ट्रिगर होने लग जाते हैं. US एज अ कंट्री इज अ वेरी डिफिकल्ट कंट्री इफ यू आर अ बेनिफिशियरी. उसमें क्या क्लॉजेज ऐसे हैं कि अगर आपको इनकम बाद में मिलती है और आप बेनिफिशियरी हो तो आपने टैक्स पहले क्यों नहीं भरा. भाई मुझे तो पता नहीं था, मैं डिस्क्रिशनरी, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है. मैं आपको थ्रू बैक क्लॉज करके पूरा पहले से टैक्स लगाता जाऊंगा जब जिस दिन आप बेनिफिशियरी हो. डिस्क्रिशनरी टैक्स में तो 10-10 साल पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो 10 साल तक इतना टैक्स लग जाता है कि आदमी एकदम Penal clauses are very heavy. But these are not penal, these are impractical clauses, but they are there. sir in such scenario whether the testamentary trust would help. हाँ, but testament वही है, फिर you are prone to सर बताया litigation था. सर यही तो बताया कि बिल से करिए. विल से करें, पर विल में से करके तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. टेस्टामेंट से टेस्टामेंटरी ट्रस्ट करके यदि आप यहाँ पे पकड़ के रखे हुए हैं. पकड़ के रखें पकड़ना कि आपके ऊपर चलेगा, पकड़ना किसके लिए? दूसरे भाई के लिए. तब कि वो would that help It will help, but see what is happening is a testamentary trust में problem क्या है? It is still subject to litigation. Because the trust का will litigation It can be changed. Last question is impact of IBC on beneficiaries shares in trust in specific 14 नहीं हुआ कब सर? 14 हो गया ना. ये तो 13 था. नहीं 14 issue of FEMA. अच्छा ये 13 एक हमारा इश्यू अंदर FEMA, बस और कुछ नहीं था. 14 is taxability in India in case of foreign private trust, where only one Indian resident is beneficiary. ये तो ऐसा बहुत हो जाएगा उसमें. ग्लोबल बोल दो. Where only one Indian resident is a beneficiary. कहाँ पे ट्रस्ट है? फॉरेन. Indian taxability. Next. Where all beneficiaries are Indian resident in a specific trust. वैसे इसमें जो इसमें एक चीज है, इनकम एंड कॉर्पस का अलग देखना पड़ेगा. इनकम एंड कॉर्पस जो है फर्स्ट क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू करना. हाँ
purpose will not accept income limitation. Sir, the case of discretionary trust, वो जो मिलेगा सब acceptable. हाँ जी, Case of discretionary trust. नहीं इसमें क्या हो रहा है ना, ये ट्रस्ट ही इंडियन रेजिडेंट बन जा रहा है बिकॉज इट्स ओनली वन बेनिफिशियरी एंड दैट्स अ रेजिडेंट. सो इसमें आपको वेट भी नहीं करना पड़ रहा है. Only one. सर ये ट्रस्ट है बाहर में, दुबई में एक ट्रस्ट बनाया हुआ है, उसमें एक ही बेनिफिशियरी है और वो इंडियन है. उसमें So therefore, it is as good as a specific trust, yeah, as good as an Indian trust. Third question is where all beneficiaries are Indian residents with share of each being indeterminate. indeterminate. MMR. Where all beneficiaries, क्या question है? Where all beneficiaries are Indian residents in a specific trust. MMR. MMR. Where all beneficiaries are non-resident, but Indian location of residents. all assets are in India. कौन सा question आपका? Fourth. Where all beneficiaries are non-resident, but location of all assets are in India. Specific trust. So देखिए, where all beneficiaries are non-resident, but the location of all assets are in India. Actually क्या है उस from assets? देखिए, उस एसेट से जो इनकम आ रही है वो तो टैक्सेबल हो ही जा रही है सोर्स रूल ऑफ टैक्सेशन के बेसिस पे. यस. अब इसका ये ट्रस्ट बेस्ड टैक्सेशन नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी बेस्ड के कारण This इनकम will allow for रेजिडेंशियल हो ही जाएगा. ड्यूटी में उसी ग्लोबल इनकम तो वहाँ भी टैक्स हो. ये कौन सा क्वेश्चन हुआ? 4 and 5. 4 और 5 वेयर ऑल बेनिफिट नॉट इन ऑल एसेट्स आर लोकेटेड इन इंडिया. Non-resident income है, but from the assets property. सेक्शन 9 में अप्रूव हो जाएगा इंडिया में. एक मिनट आप लोगों ने इतना प्रोग्रेशन डाला है. सो इस हाँ एक मिनट. वेयर ऑल बेनिफिशियरी नॉन रेजिडेंट बट ऑल एसेट्स आर लोकेटेड इन इंडिया in a discretionary trust. स्पेसिफिक ट्रस्ट. Specific sir. Specific है अगला दोनों अलग अलग. See, I'll tell you, please appreciate one thing. There is it's a transfer. It is clearly a transfer, right? हम उसको एग्जैक्ट मानते हैं, right? So, transfer तो हुआ है, पर यहाँ पे फिर रिलेटिव वाला मैं मान ले रहा हूँ कि रिलेटिव इसमें relative वाला missing है. All it is relative. रिलेटिव. So if it is relatives तो then तो आपका exempt ही हो गया. नहीं, income की बात है. एनुअल इनकम. Annual income, not for the settlement. So say ट्रस्ट की इनकम जो होगी वो टैक्सेबल नहीं होगी, पर आप समझिए सोर्स रूल पे तो टैक्स लग ही चुका होगा ना. समझिए एक प्रॉपर्टी है, ट्रस्ट इज होल्डिंग इंडियन प्रॉपर्टी, सो उसका रेंटल इनकम जो आ रहा है वो तो सोर्स रूल पे बेसिस पे आपका टैक्स हो ही चुका होगा. तो जब टैक्स हो गया तो वहाँ जाके डबल टैक्स तो नहीं होगा. नहीं, यहाँ की बात है. यहाँ पे सर आप समझिए सोर्स रूल पे टैक्स हो गया. हो गया. हो गया. Acceptable. ठीक है, next. दोनों में हो गया सर. बोलिए. You'll get a credit for that. You'll get a credit for that. You'll get a credit under the domestic laws of that country. Leave aside the treaty, you'll get under the domestic law. Six. Where the income is, आप please बोलिए ना. Can a foreign security buy a retail? What will you put in that? See, I can create a Dubai trust, but I don't have the power to put anything in the trust. ये power क्या है मेरे पास? मेरे को RBI तो power ही नहीं दे रहा. मैं foreign trust में asset चालू हूँ, मैं power क्या दे रहा हूँ? But if you have cannot. he has got foreign assets. He's got He has got foreign assets in Dubai. This question only is about the trust created by a person and resident in Dubai maybe. हाँ. And he created in favor of his assets. One of them has migrated to India. That's all. So he's a beneficiary there. Yes. हाँ तो ठीक है, पॉसिबल है. तो उसने नॉन रेजिडेंट ने क्रिएट कर लिया है, पर वैसे आपको बता रहा हूँ, एक इनकम टैक्स में फॉर्म में आप देखेंगे एक जगह है, वो होता है कि आपने अगर कोई फॉरेन ट्रस्ट बनाया है बिफोर यू माइग्रेटेड टू इंडिया, उसका भी डिस्क्लोजर दीजिए. क्योंकि लोग क्या करते हैं कि बोले भाई मेरे को इंडियन सरकार को बताना नहीं, मैं इंडिया आने से पहले मैंने कितना कमाया, तो मैं क्या करता हूँ ट्रस्ट बनाता हूँ दुबई में, यूएई में, DIFC में, उसमें सारी वेल्थ डाल देता हूँ और सरकार के मजा में बोलता हूँ मेरे पास कुछ नहीं है. आप कभी भी लाइफ में किए हो, आपको उस फॉर्म इनकम टैक्स फॉर्म में देखिए लिखा हो, कभी भी आप किए हो आपको लिखना पड़ेगा. और देखिए क्या हो रहा है कि इंडियन लॉज में कई जगह मिसिंग गैप था डिस्क्लोजर का. इनकम टैक्स में सिर्फ डिस्क्लोजर है. अभी भी जो 2 दिन पहले आया है हमारा लॉ ये IPC में, इसमें सिर्फ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ये नहीं कि मैं एसेट्स कॉन्फिस्केट कर लूँ, पर ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अब बढ़ता जा रहा है. इंडिया वाज देयर साइलेंट, not doing much about it. The world had already moved into disclosure. If you are a beneficiary in any trust, if you are
trustee in any trust, if you have a settler in any trust, you tell all of it. ये वर्ड में बहुत पहले से था, हम सो रहे थे, हम अब जाग रहे हैं. वो तो ठीक है, तभी तो आपको काम करेगा. Next is where six ladies. where the income is from business controlled in India. 6 or 7. In case of a specific trust. तो MMR हो गया. Taxable. Where the income is from business controlled in India in case of discretionary trust. Question 15 is impact of IBC. क्या सुनना चाहते हैं? चलिए सारे. A trust can't itself be put into insolvency. Trust insolvent is the benefit. अरे सिंपल सर स्टेप बाय स्टेप. So trust insolvent हो सकता है क्या? उसका मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि आप देखिए बैंक्स ट्रस्ट की गारंटी लेते ही नहीं क्योंकि वो उसको इंसॉल्वेंट क्लेम ही नहीं कर सकते. इट्स नॉट पॉसिबल अंडर द लॉ टू मेक अ ट्रस्ट इंसॉल्वेंट. So IBC Section 2 applies to companies, LLPs, personal guarantors, partnerships, proprietorship firms, individuals and notified body corporates, not to trusts. With no reference to insolvency of trust anywhere in the code IBC, trust can never be put into insolvency. Coming to settler now. What is the risk of a settler? Section 164 lets the bankruptcy trustee apply to void undervalued transactions, a transaction with an associate in 2 years before the bankruptcy application is deemed undervalued, deemed to be applied. So 2 साल का look back period है. Under section 79(2), associate includes debtors, immediate family and relatives, and spouses' relatives, and trustee of a trust whose beneficiaries include a debtor or whose terms allow the trustee to act for the debtor's benefit. Very wide definition. So a settlement onto a trust within the 2-year window can be clawed back into the settler's estate. Exposure exists even if the settler is not a beneficiary but his immediate family members. मैं खुद को beneficiary नहीं बना रहा हूँ, मेरे family members को बना रहा हूँ. 2 साल का clawback period. Clearly है IBC. So trustees, traders can reach only the trustees' personal assets, not genuine trust property. जो genuinely bona fide 2 साल से पहले डाली हुई है और 5 साल से ऑपरेट कर रही है, 3 साल से ऑपरेट कर रही है, उसमें नहीं जाए. सिर्फ ये 2 साल वाला पीरियड उसको वॉइड करके उसको ही क्लेम करें. बेनिफिशियरीज इंसॉल्वेंसी उससे इफेक्ट होगा क्या? डिपेंड्स ऑन वेदर द ट्रस्ट इज स्पेसिफिक और डिस्क्रिशनरी. डिस्क्रिशनरी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्पेसिफिक है तो पड़ेगा. उतना पोर्शन कर रहे हैं, जानता हूँ. स्टार्ट करें नेक्स्ट वाला की ब्रेक लेना है 5 मिनट में. स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं. हाँ ठीक है. Yeah, everyone is enjoying, I believe. Let us continue. There are 4 actually sub-case studies of this case study. So the first one is that where an HUF had actually converted to a basically there was a textile mill and mill was converted to a private limited company where the shares were entirely in the name of HUF. Now the HUF wants to divide basically amongst sons of Karta, 2 sons of Karta and a married daughter. And one son will get, Rohit will get spinning unit, Mohit will get weaving unit, and Priya will get a 25% cash out of that distribution. And they had executed a family arrangement deed recording an oral partition that took place in 2020. Now the HUF transfers the shares to Rohit, Mohit, and for Priya a third company is being floated, not directly, it is being transferred to Priya, the daughter. So this is the backdrop, and now the question is basically, does Kale, basically I think Kale is basically a very old judgment of Supreme Court. Yeah, old judgment of Supreme Court. So regarding that, this question says that does the judgment travel from
HUF's underlying business to the shares of HUF, shares the HUF holds in the private company, and can the company's assets be partitioned through a family arrangement among shareholders? So here in this question, we presume that the HUF के सारे assets नहीं हो रहे हैं, it's a partial partition. With some assets which has been majorly shares and cash component are being transferred to the sons and one daughter, right? So this is the first question. That does Kale travel from HUF's underlying business, and can the company's asset be partitioned through a family arrangement among shareholders? And the second question is also similar to that only. What is the assessing position under section 171 on partial position? So basically, is it a partial partition, and what will be the implication whether it can be done, right? Perfect. Because we are not resolving there, we are transferring certain things. Only business का shares transfer हो. That's it. Complete नहीं होगा. Partial partition, yeah. So we can discuss any views or we'll ask. पहले मैं एक से पूछा काले वाले रूलिंग का प्रिंसिपल जानते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज फैमिली सेटलमेंट का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वही आपको ये रूलिंग के जो 8-9 प्रिंसिपल्स हैं, बिकॉज एवरीथिंग हैपेंस बिकॉज इट्स ए क्वालिफाइड फैमिली सेटलमेंट. सो ये 1976 की रूलिंग है जो आज तक सब फॉलो कर रहे हैं, वो प्रिंसिपल सबसे पहले जानना. तो मैं रीड करूँ 2-4 मिनट लगेगा. The family arrangement should be for the benefit of the family in general. The family arrangement must be bona fide, honest, voluntary, and it should not be used by fraud, coercion, or undue influence. The parties to the family arrangement, बहुत important word है, ये बार बार आता है, may have antecedent title. ये word सबसे important है. The parties to the family arrangement may have antecedent title, ANTECEDENT, claim of interest, antecedent title, claim or interest. Even a possible claim in the property which is acknowledged by the parties to the settlement will be sufficient for the same. मतलब antecedent मतलब किसी तरीके से मेरा क्लेम बनना चाहिए बस. इनकी फैमिली में आके मैं नहीं बोल सकता, कुछ ना कुछ होना चाहिए. इनके चाचा का पोता होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो रिश्तेदारी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ लिंकेज होना चाहिए. एसेंडेंसी में लाइन में कहीं ना कहीं आना चाहिए, मतलब कहीं उस फैमिली ट्री के अंदर में आना चाहिए. ये सबसे बड़ा क्रिटिकल पार्ट है. द कंसिडरेशन फॉर एंट्री इनटू फैमिली अरेंजमेंट शुड बी प्रिजर्वेशन ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी, प्रिजर्वेशन ऑफ पीस, honor of the family, and avoiding litigation. Avoiding litigation is very critical. एक आएगा आपके पास आगे में avoiding litigation, और antecedent भी आएगा. एक example. Each party relinquishes some claims in favor of the others, and there is recognition by some of the rights in favor of the others. कोई छोड़ रहा है तो कोई पा रहा है. The dispute may be existing, एक और word दिया, और likely to arise. आज dispute है ही नहीं. So necessarily a dispute आज होना जरूरी नहीं है. Likely to arise is also qualifying under family settlement. आज झगड़ा नहीं है भाइयों में, बट हम कर रहे फैमिली सेटलमेंट की झगड़ा नहीं है. तो कई बार आपको एओ के तक आप पे झगड़ा तो था नहीं, आपको कई सीएस बोलेंगे कि इसको झगड़ा दिखाओ, कुछ दिखाने की जरूरत. Likely is also sufficient. If there is no dispute, present or future, there can be no. If there is no dispute, present or future, there can be no family arrangement. Thus, a family arrangement where there is a bona fide, where it is bona fide entered into, and for the benefit of the family, will be generally enforced by a court of law. ये जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है काले वर्सेस डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन, आपको पता है टैक्स की रूलिंग नहीं है. बट हाँ, बट इंटरेस्टिंगली है इंडिया में किसी को टैक्स में साइड किया जाता है. तो ये प्रिंसिपल्स likely, antecedent, claim, interest, कुछ ना कुछ होना होगा. अब आपका क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन का आंसर है फैमिली अरेंजमेंट एज सच कैन बी अराइव्ड एट ओरली आल्सो, नॉट अ प्रॉब्लम, और मे बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एज अ मेमोरेंडम. फैमिली अरेंजमेंट ओरली, राइटिंग, नोटराइज डॉक्यूमेंट, जज के साथ सब कुछ हो सकता है.
of what has been agreed upon by the parties. The memorandum need not be prepared for the purpose of being used as a document on which future title of properties to be founded. It is usually prepared as a record of what has been agreed upon, so that there are no hazy notions about it in future. Now coming to your question, HUF assets can be transferred by way of a family arrangement. Mode of transfer should be total partition of the HUF to the relevant co-partner to whom the assets have been allocated. पार्शियल पार्टीशन नहीं चलेगा, क्लियरली नहीं चलेगा. आप इनकम टैक्स एक्ट में पार्शियल पार्टीशन नहीं चलता है, इसको मानता ही नहीं है, दे डोंट रिकॉग्नाइज इट, देयरफॉर प्लीज टोटल पार्टीशन नहीं होगा, तो देयर इज नथिंग एल्स पार्शियल पार्टीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. वैसे इसके लिए रूलिंग्स है, मोता टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस DCID, यू कैन लुक एट दैट. नेक्स्ट इज Priya's exit via cash. But हाँ जी, नहीं हो सकता, नहीं हो so सकता. means if an It HUF, cannot override. if an HUF, let's say, transfers certain shares to any of the family members in spite of taking an NOC also from the other members, then this transaction is not exempt anywhere. Section 56 to 10 as well as Section 50 CA both will apply. If in this case of shares. Actually interesting है, इसमें एक एक अंदर void treat कर देते हैं. इनकम टैक्स बात में इनकम टैक्स 171 का consequences they will treat it as void. But if they treat it as void, then what is the consequence of 170? taxability. Taxability. So 56 to 10 and 50CA cannot be avoided by a partial partition of any एक ही of चीज है, the सिचुएशन में देख सकते हैं क्योंकि HUF is also known as a individual, so वो ट्रांसफर से एक्सेप्ट नहीं, but relative नहीं, उसमें relative to HUF Here is a twist, sir. So what the benefit of individual and HUF? नहीं 56 from HUF नहीं 56 लगेगा, पर जो ट्रांसफर है वो तो दे ही सकता है ना इंडिविजुअल. मैं आपको गिफ्ट दे सकता हूँ ना, पता है मुझे नहीं लगेगा टैक्स, बट आप 50CA says without consideration if you are transferring anything to any person. मैं गिफ्ट तो दे सकता हूँ. ये तो ट्रांसफर ही नहीं है ना. But HUF इंडिविजुअल दोनों दे सकते हैं. HUF इंडिविजुअल marriage अलग चीज है. Sir, here is a twist also. बोलिए. And it is not recognized as a transfer. Partial partitions are not recognized. Not recognized. Then they are not recognizing at one place it is a partition at all. Then why there would be any 56 to 10 or 50 CF? देखिए वो एक डिबेट है, मैंने ऑफिसर्स को लगाते भी देखा है, पर उन्होंने वाइड मांगने तो मैंने दोनों लॉजिक की बात कर रहे हो. When जब आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो, there is a partition. अच्छा लेट्स स्टिक टू द क्वेश्चन. सो सुनिए, लेट्स स्टिक टू द क्वेश्चन. इन्होंने एक सब्सिक्वेंट बोला कि एक्शन क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या ये पार्शियल पार्टीशन हो सकता है? आंसर इज नो. Partial वो तो क्लियर है. अब पार्शियल पार्टीशन पे टैक्सेबिलिटी क्या होगी, दैट्स अ सेकेंडरी इशू, दैट्स अ डिबेटेबल इशू. ठीक है. Sir, ये जो बोलिए. एक क्वेश्चन, antecedent title, right, interest, whatever, how many generations you can go up? See, it's a fact, it's a contextual matter. ऐसा कोई लिखा नहीं कि 3 जनरेशन 2 जनरेशन. ऐसा 5 जनरेशन में चाहे तो बहुत है, मैं जानता हूँ. 56 to 10 तो कहीं भी एप्लीकेबल कराने के लिए बचा सकते थे. तो फैमिली सेटलमेंट में तो बहुत वाइड लेते हैं. 100 फैमिली मेंबर्स इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज को कवर करते हैं. फैमिली सेटलमेंट एक्चुअली हुआ है. आपकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज है जो 4 जनरेशन से चली आई वो फैमिली सेटलमेंट से ही सॉल्व होगी. जैसे आपको पता है ना, फैमिली सेटलमेंट में आगे क्वेश्चन आएगा. सो फैमिली सेटलमेंट में प्रैक्टिकल सिचुएशन बता रहा हूँ मैं आपको कि देयर वाज अ पर्टिकुलर बॉडी was holding the asset. Family settlement. Next. Some mind shape. Sorry. So, family settlement का concept समझिए. Because कई बार क्या होता है कि ancestral property 4 जनरेशन तक अटकी हुई है, फिर उसको जब सेटल करने जाते हैं, so उसमें से कैश आता है, सबको जाता है. अब वो किसको क्या टैक्सेबिलिटी है, so अगर वो एंटीसीडेंट फैमिली ट्री के अंदर में कहीं पड़ जा रहे हैं, तो 4 जनरेशन तक भी मैंने देखा है वो फैमिली सेटलमेंट और हो रहा है एक्चुअली में हो रहा है. सो ऑल ऑफ दोज ओल्ड प्रॉपर्टीज 100 years old, 150 years, 120 years, वो फैमिली सेटलमेंट में क्लोज हो रहा है.
नहीं सर, आजकल तो सर पूछी मत सर। सेकंड भी हो जाता है। आपको विश्वास नहीं करोगे, मतलब ऑन अ लाइटर नोट, मैं ट्रस्ट का सबसे ज्यादा काम करता है मैरिज टाइम में। इट्स प्री एलिमेंट्री टूल। सबसे ज्यादा मैं बता रहा हूँ, मैरिज सीजन में फोन सबसे ज्यादा आता है ट्रस्ट का। मतलब क्यों, शादी होने वाली बेटी की। बोले नहीं So next question चलते हैं। नहीं सर, टैक्स तो लग रहा है ना सर। वो जो प्रॉपर्टी बिकेगी तो कैपिटल गेन्स तो लग ही जा रहा है ना। पुरानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन्स लग जा रहा है। कैपिटल गेन्स लगने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन पे टैक्स फ्री है। थर्ड पार्टी को जो बेचेंगे तब लगेगा। सर एक पुरानी जब बिल्डिंग है, उसमें अगर आप घूमने जाओगे फैमिली ट्री में 200 आदमी आ रहे हैं, राइट सर। अब कौन बेचेगा क्या बेचेगा पता नहीं, पर किसी एक नहीं सर। बट सर आपका इनका शायद सवाल ये है कि यदि स्वैपिंग होगा एसेट्स का बाय चांस, यदि एसेट्स की स्वैपिंग होगी तब कैसे होगा? फैमिली अरेंजमेंट में हो रहा है ना, वही फैमिली नहीं होगा। थर्ड पार्टी को ऑब्वियस है। थर्ड पार्टी को बेचेंगे तब। We move to the इसमें next. जनरली क्या होता है, मैं बता रहा हूँ आपको कि समवेयर सक्सेशन में एक आदमी के पास में उसके रजिस्टर होते होते उसके पास आ गया, पर जब वो बेचने जाता है तो 100 आके प्रोटेस्ट करते हैं, तो बोलते मेरा भी था, मेरा भी था, मेरा भी था। तो सबको बिठाते कमरे में। अभी कलकत्ता में गोल पार्क में प्रॉपर्टी के लिए मेरे क्लाइंट खरीद रहा है, तो उसमें बोले एक ही के नाम पे है, मतलब द प्रॉपर्टी इज ओनली इन वन पर्सन्स नेम, बट ऑल दी अदर ब्रदर्स एंड अंकल्स एवरीवन इज सेइंग नहीं हमारा भी है। सो इंजंक्शन फाइल कर दी, तो 20 साल नहीं बिकेगी प्रॉपर्टी। तो सबको बिठाया, सबको बोला मैं दे दूंगा, अंकल को भी दे देगा पैसा। कैसे देगा अंकल? फैमिली सेटलमेंट, पैसे तो दे नहीं सकता गिफ्ट। सो वो फैमिली सेटलमेंट में कवर हुआ। ये प्रैक्टिकल सिचुएशंस। We will move next. We are in the first question का third part. Then Priya's exit via cash. Is it her share in the partition? We already discussed partial partition not recognized. Is it a slump sale of a unit section 50B or a buyback subject to section 152A? So buyback cannot be there because the company is not transferring any money. Buyback cannot be a part of it. Family settlement is always between individuals, not a company. So buyback is out of question है, but taxability तो बहुत simple चीज़ है। ये तो आपने डिस्कस कर चुके हैं। इस पार्ट की there cannot be a partition, there cannot be a buyback, whether it is a slump sale or not. Slump sale also cannot be only of cash; it has to be some undertaking. So I believe it is nothing, none of these options, Yeah. right? We can move ahead. Can the HUF, after the amendment of Finance Act 24, in which 47 clause 3 was amended, so can the HUF still give shares to a private company to be floated for Priya? Answer is no. Is the family arrangement deemed chargeable as a partition, a release, a settlement, or a conveyance of shares, and any stamp duty is applicable? There are two situations. In one, immovable property is not there. In one, immovable property is there. Okay, immovable property में this is a stamp duty question, not an income tax question. So 4 words use किए हैं: partition, release, conveyance, and settlement. Now I can tell you, settlement is a better answer. And settlement में 1% Calcutta में at least 1% stamp duty होता है immovable property पे. So मैंने एक transaction किया था और एक जन को, so मैंने purchase की property समझिए 1 करोड़ रुपए की, तो मैंने अपना स्टैम्प ड्यूटी 8% 7+1 कर दिया। उसके जो दे रहा था उसमें एक एंटीसीडेंट उसके साइड से था जो ट्रबल कर रहा था कि मैं होने नहीं दूंगा। सो मुझे जो 1 करोड़ देना था, सो मैंने तो 8% भर दिया, पर उसमें एक जन को मेरे को सेटलमेंट में देना था। तो मैंने बोला मैं वो स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरूंगा, तो उस पर्सन को जो 20 लाख रुपए मिला उसने 1% स्टैम्प ड्यूटी भरी। अगर आप चाहोगे क्यों, तो मेरे को 3-4 मिनट देना पड़ेगा, मैं पढ़ के बता सकता हूँ क्यों रिलीज, क्यों पार्टीशन नहीं लगेगा। करो कि सीधा बोलो सेटलमेंट इज फाइन, पढ़ो चलिए। सो पार्टीशन क्यों नहीं होगा? सो व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ पार्टीशन? Instrument of partition means an instrument where the co-borrowers of any property divide or agree to divide such property, and includes also a final order for effecting a partition passed by the revenue authority or the civil court, and an award by an arbitrator directing a partition. A family settlement is not a partition because parties need only an antecedent or a possible claim. They need not have vested co-ownership title. Partition होने के लिए co-ownership title चाहिए.
So title हमारे family settlement में नहीं चाहिए. And descent होना चाहिए मतलब somewhere in the family tree. Now coming to the next question, release. Release, that is to say, any instruments where a person renounces a claim upon another person or against any specified property. A release is a unilateral transaction when one person renounces a claim upon another person or against specified property and by itself has no effect on disposition of property. A family settlement as a whole therefore does not qualify as a release. Though a release, because कईयों को मिलेगा कहीं छोड़ेंगे, so release is only one side. Though a release may be recorded as a component within the larger family settlement. So it is a subset of a family settlement, but it is not a family settlement. Third is conveyance. Conveyance includes a conveyance or sale every instrument by which property, whether movable or immovable, is transferred inter vivos and which is not otherwise specifically provided for by the schedule. A family settlement may involve a conveyance of property. So again, this is a subset of a settlement. So a conveyance, a release, these both are subsets, but partition is completely different. The prerequisite is a core. Now if I look at settlement, means a non-testimony disposition in writing of movable or immovable property in consideration of a marriage for purpose of distributing property of the settlers, of the settler among his family or those for whom he desires to provide and for the purpose of providing for some persons dependent upon him or for any religious or charitable. So it is a settlement. And settlement will stand to be 1%. Next. So move to the next case study. Basically, in this what is happening is that there is a family, Shah family, and in Shah family there are 4 entities. One is Shah Foods, one is Shah Realty LLP which owns properties, one is Shah Holdings which holds 60% of Shah Foods and 40% of a listed company, and a discretionary trust whose beneficiaries are family members, but those family members are, let's say, first cousins. Those are first cousins. Okay. And now these cousins want a split. What they want, that there are basically 3 branches, 3 brothers and their descendants. So there are 3 families of cousins. माने एक cousin एक से आया, एक से दूसरा से, so वैसे 3 family का split होगा, in which each one wants to take each one of the 3 businesses. The LLP also has to be carved out so that each one gets one property from that LLP, and they want to demerge Shah Holdings into 3 resulting companies. So basically 3 kind of divisions of the entire conglomerate of Shah family has to be done. Now there are 3 questions. First, in case of an LLP, because they want to divide the LLP, is a partner's interest in LLP a capital asset? Yes. Yes. On retirement come reconstitution under the LLP agreement, what is the interplay between section 9B and 45(4) of the old erstwhile act when immovable property is allotted to an outgoing partner? इसका मैथमेटिकली समझाना पड़ेगा, बट हाँ दोनों लगता है. दोनों लगेगा, माने मतलब अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो 20 मिनट ले लूँगा, बट जस्ट बता रहा हूँ दोनों लगेगा. तो एग्जाम्पल से कोशिश करूँ क्या, नंबर से कोशिश करूँ, सब जो बेहतर छोड़ देते हैं. बेसिकली बता सकते हैं, बेसिकली 9B जो है वो होता है कि when you are transferring any property being capital asset or stock from the firm to firm or LLP, whatever it is, to the partner on reconstitution. Reconstitution has also been defined in that by way of explanation. When there is any change of partners or reconstitution between profit sharing. And 45(4) will apply where any of the partners is getting value more than the capital contribution in the books. So both these sections will apply, and assuming it is a capital asset in LLP which has been given in the listing, so 9B will also apply and this will also apply. There is one 9B will apply. Yeah, this is thing. Now second is, can a family arrangement by itself transfer LLP property to a partner, or must the LLP act through? What's the question, sir? Question 2. फर्स्ट में 9B और 45.
ऑब्जर्वेशन नहीं है, बट आई एग्री टू, बस एक मिनट आपको समझा दे रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक फॉर वांट ऑफ एन एग्जाम्पल। समझिए 3 पार्टनर है, तीनों के पास 1 करोड़ रुपया है उनके कैपिटल अकाउंट में, और यहाँ पे एक कैपिटल एसेट है, राइट सर। एक पार्टनर बोलता है मैं ये कैपिटल एसेट ले लेता हूँ, राइट। उस पार्टनर को कैपिटल एसेट मिल जाता है, क्या होगा यहाँ पे, टैक्स लग जाएगा। टैक्स किसके हाथ में लगेगा, LLP के हाथ में लग जाएगा। डन। सो अज्यूम इस तीनों के हाथ में 1 करोड़ था, ये एसेट जो है इसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, 4 करोड़ रुपया लेते या 3 करोड़ रुपया लेते फॉर सिंपलिसिटी। तो 3 करोड़ जो आया कैपिटल गेन, सबके 3 करोड़ एक्स अमाउंट था, उसमें कैपिटल गेन्स पे कर दिया। तो मेरे बैलेंस शीट में पार्टनरशिप में क्या आया, 3 करोड़ रुपया आ गया। तो वो तीनों के कैपिटल में घुस गया, तीनों के 1 करोड़ था। अब क्या बन गया कैपिटल मेरा, 2 करोड़ हो गया। अब उसमें से एक पार्टनर बोलता भाई मेरे को तो एसेट मिल गया, मैं चला, मेरे को जो चाहिए था एसेट चाहिए था, मेरे को मिल गया, मेरे को रिटायर करना, बताइए टैक्सेबिलिटी क्या। सबके पास 3 पार्टनर्स है, तीनों के पास 1 करोड़ रुपए अपने कैपिटल अकाउंट में और एक कैपिटल एसेट है। ऐसे 3 करोड़ एक्स अमाउंट ले लीजिए टैक्स देने के लिए। सो क्योंकि टैक्स तो अनफॉर्चुनेटली पार्टनरशिप फर्म ही देता है, इट इज एज गुड एज अ ट्रांसफर ऑफ एन एसेट। सो पार्टनरशिप फर्म ने दिया, किसको दिया, पार्टनर को दे दिया, राइट। पार्टनर को दे दिया तो मेरा पार्टनरशिप फर्म में कितना पैसा आ गया, 3 करोड़ आ गया मेरे पास। सर टेक्निकली आ गया, कंसिडरेशन 3 करोड़ आ गया ना, कंसिडरेशन आ गया। वही मैं बोला, थोड़ा मैथमेटिकली ध्यान से सुनिएगा। मेरे एग्जाम्पल में मैंने जब बनाया इसको, उसमें लिया कि प्रॉपर्टी का दाम था 1 करोड़ रुपया, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर अ मिनट सिंप्लिसिटी के लिए 4 करोड़ पकड़ते हैं, और कैपिटल अकाउंट में रिटायरिंग पार्टनर 1.2 करोड़ था। नोट कर लिया सबने। फेयर मार्केट वैल्यू फॉर 9B, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 4 करोड़, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 करोड़, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 9B में 3 करोड़ रुपया पे होगा, ये गेन हो गया। अब क्रेडिट ऑफ 9B गेन, शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर 3 करोड़ का 1/3 बन गया 1 करोड़ रुपया। उसका कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा था, 1.2 करोड़ बोला था मैंने, उसमें 1 करोड़ जोड़ दीजिए, 2.2 करोड़ हो गया। अब आ जाते 45(4) में, तो बंदा रिटायर करता है और उसको मिला क्या है, 4 करोड़ माइनस 1.8 करोड़ रुपये टैक्स, 45(4), सिंपल है। हाँ जी, कैपिटल गेन्स, और वो साइड पार्ट है LLP, वो टैक्स बनता है, उसका भी टैक्स LLP बनता है, दोनों का LLP बनता है। पर एक चीज देखिए इंटरेस्टिंग है कि उसको जो उसका कैपिटल में ऐड होने के बाद में जो डेल्टा अमाउंट उस पर टैक्स लगा, एक में 4 करोड़ पे लगा, एक में 1.8 करोड़ पे, दोनों में 4 करोड़ का नहीं लगा। हाँ 3 करोड़ पे लगा, सॉरी 3 करोड़ पे लगा, 111, तो मेरा कैपिटल अकाउंट 1.2 प्लस 1 हो गया 2.2 हो गया। पर मेरे को प्रॉपर्टी कितने की मिली है, 4 करोड़, 4 माइनस 1.2, मुझे एक्स्ट्रा 1.8 मेरा गेन्स हुआ है, उस पर फिर टैक्स बना, पर टैक्स पार्टनरशिप फॉर्म बन गई, रिवर्स चार्ज GST ले रहे हैं, यही है कॉन्सेप्ट बस। ठीक है, इसमें सर एक ऐड सिर्फ कर देता हूँ, हाँ बोले, जो ये 1.8 के ऊपर में जो टैक्स लग रहा है, on this 1.8 whatever tax is being paid, you will get a benefit of this under Rule 8AB. There is a Rule 8AB in which in future when you अच्छा ये तो यहाँ पे सेल हो गया ना, लेकिन इसके अंदर में वो Rule 8AB वाला अपोर्शनमेंट नहीं होगा क्या, यहाँ पे नहीं होगा, because you have already sold, you have already asset ही चला गया, तो उसको देखो, you will not get that benefit. It was a revaluation of asset and you are exiting the partners, तब आया। So the third question is, क्योंकि एक टैक्स तो लग गया ना, can a family arrangement by itself transfer LLP's property to a partner, or must the LLP Act route of reconstitution, dissolution and asset distribution be followed? LLP cannot itself transfer property under the family scheme. So you have to follow the normal LLP route. Yes, what's your individuals your normal. What is the stamp duty fallout in your state? Normal conveyance will apply.
नहीं किस चीज में इंडिविजुअल प्रॉपर्टी अगर दे रहे हैं पार्टनर को, आप पार्टनर वाला क्वेश्चन नहीं था, सेटलमेंट के लिए था। नहीं मतलब इसमें वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन। अच्छा हाँ, नॉर्मल स्टैम्प ड्यूटी लगी। नॉर्मल स्टैम्प अच्छा मैं क्वेश्चन समझिए, सेटलमेंट का सॉरी सर, वो सब कुछ सब क्वेश्चन अच्छा ठीक है, सॉरी सर। We are into the third point, third question. वो भी स्टेट टू स्टेट है बंगाल में। Okay. For the demerger of sorry. हाँ कहाँ है, कौन सा क्वेश्चन? ये मेरा सही आ रहा है। Case study 2 का question 3. बोलिए Got it? बोलिए। For the demerger of Shah Holdings, can a quote NCLT scheme under 230 to 232? ये नहीं, हाँ ये नहीं। बोलिए बोलिए। For the demerger of Shah Holdings, which is the company, can the quote NCLT scheme under 230 to 232 of the Companies Act be used to give effect to a family arrangement? And what is the section 47(6)(b)(6)(d exemption test? That is the exemption which is available in case of a demerger. So basically 230 to 232. बोल लीजिए। देखिए, family settlement can be a very good logic to the NCLT for a demerger, right? They will do the demerger. They will do a demerger. Whatever they'll do a demerger, they'll do a demerger. Because if they find logic, everything. But the problem is, it will be a taxable demerger. So NCLT does not give you an immunity from taxability. NCLT may demerge this phone into two parts and give it to you. But for income tax, it is a broken phone. तो tax लगा. So NCLT definitely, हमने family settlement देखा हुआ है, हमने खुद डाला भी हुआ है कि अक्सर ये demerge क्यों करें family settlement objective, but हमने undertaking की definition को meet किया, हमने tax neutrality for demerger को meet करते हुए किया, यहाँ पे वो लग नहीं रहा। Yes, yes, you can. So एक चीज में ऑप्शन में पूछा जाता है कि 3 तो नहीं पर 2 कैसे कर सकते थे इसको? 3 अगर यहाँ तो 3 करने की बात चली थी ना, 3 नहीं अगर 2 करना तो कैसे करते? वो डिविजन्स को डिफाइन करते हैं। कैसे करते सर? ये 2 तो शाह होल्डिंग्स के बाद तो 2 शेयर होल्डिंग ही है। शाह होल्डिंग्स के बाद 60% शेयर होल्डिंग और शाह फूड्स है, 40% ऑफ शाह इंडस्ट्रीज है। तो कैसे करते हैं डिमर्जर? 2 इन्वेस्टमेंट्स और तो कुछ है नहीं, कैसे क्रिएट करते? शाह फूड्स को मर्ज करते तो शाह होल्डिंग्स में और फिर इसको ट्रेजरी डिवीजन करके डिमर्ज करते तो अंडरटेकिंग। नेक्स्ट, the discretionary trust, if the trustees appoint the corpus to the 3 branches as part of the settlement, is it transferred? If the trustees apportion the corpus, the Shah family holds a discretionary trust. Now they are apportioning the corpus to 3 branches as part of settlement to the 2 sons and 1 daughter. If the trustees appoint the corpus, to the 3 branches as a part of settlement, is it a transfer? A revocable transfer under 61, or is it a transfer first? Whether it is a revocable transfer under 61. So कौन कर रहा है? ट्रस्टी कर रहा है. Trustee is appointing the corpus of the 3 apportioning branches. the corpus basically. A revocable transfer under 61. The receipt लिखी हुआ है. Point at the small thing. Basically, ये drafting ये वो है, but we will try to analyze. ये बोल रहे trust है. इस trust का you want to be an apportion. The trustees are basically distributing. तो डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्ट है. Normal एकदम distribution एग्जैक्ट है. cousins के बीच में हो रहा है. ये कजन्स के बीच की बात नहीं है. यहाँ कजन से नहीं देखा जाएगा. हाँ. किससे देखा जाएगा बताइए? Beneficiary कौन? नहीं. क्वा द सेटलर. तो सेटलर तो दादाजी थे. उसके लिए तो सभी डिसेंडेंट्स हैं. सभी descendants. So कजन्स के बीच में सेटलमेंट जरूर हो गया है और ट्रस्टी को बोल दिया भाई इंप्लीमेंट कर दो और ट्रस्टी को बोला मैं कर देता हूँ. हेलो सर. So बट दिस इज क्वा द सेटलर. तो क्वा द सेटलर तो दादाजी के लिए तो सभी डिसेंडेंट्स हैं, तो एग्जेम्प्ट है. exempted. So a receipt without consideration under section 56 to 10, given the trust beneficiaries include unborn descendants who arguably don't fall within relative. But कौन सा क्वेश्चन सर? ये सब और whether it will come under 56 to 10 or not. विदाउट कंसेशन अंडर गिवन द ट्रस्ट बेनिफिशियरी So exempted 56 to 10. सब एग्जेम्प्ट सब Some exempted. Correct. The last question of this case study. Shah Industries Limited is listed
actually it is related to LODR. If the three branches end up crossing 25% individually, मैं सबको does बताया the SEBI inter-se promoter transfer exemption apply? Does the family arrangement need to be disclosed under regulation 30 of LODR? Open offer will trigger. So transfer of shares inter-se promoters disclosed for 3 years shall be exempt from the applicability. 3 साल से अगर प्रमोटर है तो exempt हो जाएगा. However, SEBI in case of wealthy restaurants informal guidance has held that exemptions such as inter-se transfers between promoters shall be applicable only in case of listed company and not applicable to companies holding the listed company. So नहीं होगा. So अगर listed company directly होता तो हो जाता. Listed में directly Directly है sir. I thought इसमें हो रहा है. It is just talking about disclosure. Disclosure तो रहेगा. Shah Industries is listed. अच्छा आप शाह इंडस्ट्री को शाह होल्डिंग क्यों कर ही नहीं सकते. शाह आप देखिए ना एग्जाम्पल में शाह इंडस्ट्रीज हेल्ड बाय शाह होल्डिंग्स. Shah Holdings. तो आप शाह होल्डिंग्स के लिए क्वेश्चन ही गलत है. इस Shah Holdings का डिमर्ज करके उसके शेयर्स को ट्रांसफर कर रहे हैं. डीमर्ज तो हो ही नहीं सकता. Shah Holdings को शाह होल्डिंग्स जब डीमर्ज करने की कार्यक्रम में पहले ना कर. अगर बिजनेस अंडरटेकिंग वाला ट्रेडिंग है. मैं बोला यहाँ पर क्वेश्चन में गड़बड़ लगा. गड़बड़ है. See, I read it in this manner. I read it in this manner कि शाह होल्डिंग्स को क्या बोलते हैं. ठीक है. बाकी काम अच्छे ही है. Next question. Sir, should we take a 10-minute break? I see. ये कर दो है. इसके बाद दो केस स्टडी. चाय नहीं मंगवा लें. चाय मंगवा 3, 4 चाय है. मंगवा लो भाई. हाँ. Because नहीं तो क्या होगा 6 बजे तक लंबा हो जाएगा. I think what do you say, sir? As you want to continue, we can continue. एक 9 बजे की फ्लाइट है. अपना 6 बजे का टाइम है ना. इसके बाद में 2 केस स्टडी बचा और एक जीडी हो जाएगा. बहुत सिंपल है. ये जो है बहुत सिंपल है. बहुत सिंपल है. एक जीडी 3 बचा है. 1 घंटे में हो जाएगा. हो जाएगा. ये आधा घंटे में हो जाएगा. मैं कम बोलूँ. ये करके उसके बाद चाय करना है. ठीक. अच्छा तो ये फटाफट करते हैं. मैं एक बात बोलूँ. ये वाला जो है ना केस स्टडी 3 बहुत फास्ट हो जाएगा. मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया होगा. सर इसके अंदर बैकड्रॉप में there is a Mrs. Lakshmi Iyer, resident senior citizen, has 3 children. Suresh is a resident, Ramesh is a resident, and Geeta is a US citizen OCI holder. They hold shares in Iyer Brother Holdings Private Limited. It's a private limited company, which in turn holds 100% of an operating company. So since nothing is mentioned, we are assuming operating company also has private company. Nothing is mentioned. And the family has arranged between themselves that Suresh will take the operating company by buying out Ramesh and Geeta's stake in the holding company, because the holding company owns this company, at a 40% discount to the fair market value of shares. The reason they have given, I am just reading out, but because the operating company has pledged its assets to bankers and Suresh is taking the risk. ये मुझे अभी तक समझ में नहीं. This is actually the event I feel. मेरे को समझ में 4 बार पढ़ा सब. This is actually very छोटा चाहता है कि वो रिस्क सारा लेता है. This is also a consideration. हाँ 40%. Yes. This is also a consideration. एक बार क्वेश्चन दिया उसके ऊपर. चौथा नंबर को मुझे आज समझ नहीं आया क्या है क्वेश्चन. ठीक है चलिए. A family settlement deed is drawn up reciting that all parties had antecedent rights in the holding company's business. So with this background, antecedent rights. what you were telling about the judgment. बताइए आंसर. Can the 40% below FMP transfer be defended as a family arrangement so that 50 CA and 56 to 10 does not apply, both on the recipient and the seller? In either case also, isn't it exempt being a relative because all are brother and sister? तो simple exemption ही हो जाएगा इसमें. मेरे हिसाब से मधुमती के छत्ते में हाथ दे. क्यों 40% में खरीदा बेची कर. सिंपल कैश दे दो ले लो. मच बेटर इन लाइफ है. मतलब if I was मतलब I know how the revenue officers behave. You have to go that extra mile in convincing them. Yes, you can get through with it.
But I would say that just do two separate transactions. Life will be a lot more easy. Next is दोनों गिफ्ट कर दो मतलब is Geeta a relative of Suresh within the explanation of section 56 to 10? What about Mrs. Ayer's transfer to Geeta, a US citizen daughter, a relative? Yes. कैसे स्टेटस साइटस से क्या बोलते हैं? मतलब FEMA Yes, relative. Irrespective whether she was डॉक्टर नहीं रही. FEMA is, sir, your third question. Geeta is transferring Indian unlisted shares to a resident at a price below FMB computed under FEMA's pricing guidelines. Is the inward remittance repatriation defensible? What if she is a US tax resident? PFIC and gift tax exposure. Basically, passive foreign investment they are asking and gift tax exposure. बताइए बताइए भरत कुछ बोल सकता है भरत क्या बोल रहा है यू कैन बोला ना कैसा नजर आ रहा है यू गेटिंग समथिंग फॉर चीप इन इंडिया नो प्रॉब्लम do I explain PFIC regulations कुछ थोड़ा सा मैं समझा सकता था टाइम लगे 5 मिनट बताओ तो गिफ्ट टैक्स इंडिया में गिफ्ट टैक्स है अब वो यूएस रेजिडेंट है उसका इशू जरूर हो सकता है सो यूएस का भी थोड़ा गिफ्ट टैक्स का आपको बता देता हूँ कि हर आदमी को वहाँ पे एक लिमिट मिला हुआ है 15 मिलियन का और $19,000 का तो हर साल वो $19,000 गिफ्ट दे सकता है अपने किसी को रिलेटिव को जिसको भी देना है उसको एंड पूरे लाइफ टाइम में उसको गिफ्ट टैक्स नहीं लगेगा 15 मिलियन तक सो अगर मैंने आज 1 मिलियन दे दिया तो मेरा लिमिट घट के 14 मिलियन फिर मैंने 3 मिलियन दे दिया 1 + 3 4 हो गए तो 11 हो गया और वो लिमिट 19,000 के नीचे होने से अगर हर साल 1 साल को 19,000 है उसके नीचे करता तो वो 15 मिलियन का लिमिट खत्म नहीं होता है सो यूएस गिफ्ट टैक्स का यही फंडा है बस आप लोगों को $19,000 तक दे सकते हैं यूएस ग्रीन कार्ड होल्डर यूएस रेजिडेंट H1B वीजा 19,000 इज exempt in a year but his lifetime limit beyond 19,000 is 15 million देने वाले को लग जाए हाँ जी देखिए देने वाला जो है ना थोड़ा यहाँ 56 के साइड से थोड़ा घूम के उधर देखिए सो देने वाले पे जब वो करा उसके एस्टेट पे लगता है सो इनहेरिटेंस टैक्स भी उसके एस्टेट पे लगता है राइट सो 56 के माइंडसेट से निकलिए थोड़ा सा कि रेसिपिएंट के पर्सपेक्टिव से सो रेसिपिएंट को मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं लगता है उसको मिल रहा है वो एंजॉय करेंगे यहाँ पे इनएडिक्वेट कैसे ठीक है यहाँ पे घूमता है ब्लैक मनी ना इसलिए फ्री में किसी ने दे दिया मेरे को मानते नहीं है यूएस में बोलते फ्री में अगर आगे तो ले लो दोनों हाथ से बस अगर देने वाला अगर यूएस का सिटीजन है तो उस पर टैक्स लगा दो अगर इंडियन है सो आई गिव 500 crore टू माई सन इन यूएस पूरा ग्रीन कार्ड होने खुशी खुशी ले लेंगे कोई टैक्स नहीं सॉरी क्वेश्चन 3 में PFIC बताओ थोड़ा सा 5 मिनट के लिए नहीं बता तू बता सकता बेटर PFIC So PFIC is क्या फॉर्म है इसका पैसिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनी So basically, okay, let me read it out for you. So this was established to prevent US taxpayers from deferring taxes on passive income earned through foreign entities. It includes US citizens, regardless of residence, US green card holders, resident aliens, domestic corporations, partnerships and trusts. PFIC is a foreign corporation that primarily generates passive income such as dividend, interest, capital gains, rentals, royalties or hold assets that produce an income. So दो criteria है या तो income है या passive generating asset है दो criteria. Under US law, a foreign corporation is classified as a PFIC if it meets either of the following criteria. Income test. At least 75% of the corporation's gross income is passive income. So हमारे केस में यहाँ पे कौन सी कंपनी जिसमें गीता का शेयर है नाम क्या है उसका वो तो ऑपरेटिंग कंपनी होल्डिंग कंपनी IR ब्रदर्स होल्डिंग कंपनी है पैसिव इनकम इंक्लूड ये सब जो मैंने बोला एसेट टेस्ट एटलीस्ट 50% of the corporation's assets produce or help to produce passive income for at least
for this test, assets are taken on a gross basis. The relative weighing of passive assets such as cash, marketable securities, and investment property against active assets determine the outcome. So आपके हिसाब से इस केस में जो होल्डिंग कंपनी है वो PFICI बनती है? अभी तो बोला या तो 50% से ज्यादा आपका एसेट हो जो मतलब जनरेट करने वाला तो है, तो आपकी होल्डिंग कंपनी के पास एसेट है जिससे इनकम आएगी ना, डिविडेंड इनकम होल्डिंग कंपनी में ना आपका शेयर्स। हाँ होल्डिंग कंपनी में राइट, इनकम आ रही नहीं आ रही वो तो दिखा नहीं हुआ है, पर होल्डिंग कंपनी तो है। होल्डिंग कंपनी में एक ही इन्वेस्टमेंट है, 100% तो हो गया PFICI? नहीं, PFICI rules contain a look-through rule to ensure that a foreign holding company is not treated as a PFIC before merely because it owns shares in an active operating company. The rule applies if the foreign company being tested owns directly or indirectly more than 25%. तो वो look through करके उसको देख लेता है। So आपका नहीं है, PFICI नहीं लगेगा। PFICI लगने से क्या होता है? PFIC लगने से क्या होता है कि यूएस आज ही टैक्स कर लेता है। नेक्स्ट, If the operating company क्वेश्चन 4 है क्या? गलत है। चार्ट तो क्या लिखा है? 4 नंबर क्या लिखा स्टार्ट में? ब्लैक शेयर पे क्या लिखा है? आप ही पता करें, मुझे भी आंसर नहीं पता है। बोलना क्या चाह रहे हो? बोलना ये चाह रहे हैं कि उसका ऑपरेटिंग कंपनी का कुछ प्लेज्ड एसेट्स जो है ना, वो प्लेज था, उसको रिलीज करके वापस से रीप्लेज कर दिया और बीच में रिलीज किया। उसी रुपए से फाइनेंशियल असिस्टेंस देके सुरेश ने एक्विजिशन किया। तो रिलीज होकर कैश निकला था, प्लेज रिलीज करने से कैश निकलता था। गलत क्वेश्चन है। नेक्स्ट, आउट ऑफ सिलेबस। टुडे हो इन बोथ कार क्या लगता है आप लोग को? कि 50 से 56 to 10 हटाने ये डिस्काउंट वाला है ना, डिस्काउंट में दिया 40%। 40%। तो जब 40% में किया, गार लग सकता है इसमें? देयर इज अ क्लियर कट गिफ्ट का पॉसिबिलिटी है जहाँ पे कुछ टैक्स नहीं लग सकता, तो गार तो कहाँ से आएगा इसमें? टैक्स एविडेंस So we move to the last case 34. What does happen? What does Case study 4. In 2010, the 4 sons of late Sri Ranjit Singh executed a registered family settlement, dividing a network of partnership for private limited company and ancestral agricultural land. The 2 daughters were paid 25 lakh each in full and final settlement of their claim. In 2026, the daughters filed a petition suit relying on Rita Sharma, Rakesh Sharma, claiming retrospective co-partnership right. To avoid litigation, the brothers agreed in 2026 to a fresh purchase arrangement. Each daughter is now allotted 15% shareholding in family private limited, 1 agricultural land parcel each, and admission as partners in newly incorporated LLP that will take over one of the partnership business. Basically, पुराना arrangement को scrap किया, नया arrangement के through they have reconstituted. Now, question 1 is 2026 arrangement have fresh transfer by the brothers or a recognition of daughters antecedent co-partnership right that always existed by operation of 2005 judgment amendment as interpreted in Vinita Sharma. Which characterization survives at the AO level and what evidence is needed? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, 1 and 2 एक साथ बोलो। Second question is capital gain exposure on the brothers' transfer of shares. Even if the family says it is a settlement, can the AO tax it as a transfer because the brothers had received those shares in 2010 settlement? They treat the daughters as having no claim. थोड़ा सा ना मेरे को हिंदू सक्सेशन एक्ट का थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देता हूँ इसके लिए, नहीं तो क्वेश्चन आपको तो समझ में नहीं आएगा। सो Section 6 was substituted to make a daughter a co-partner by birth in a joint Mitiksha joint property, family property, in her own right and in the same manner as a son, with the same rights in the co-partner property and the same liabilities. The right is subject only to the provision to Section 6(1), which says any disposition, alienation, partition or testimony disposition effective before 20 December 2004
2004 में जो सुप्रीम कोर्ट रूलिंग आई थी उसके पहले में जो सेटल हो गया उसको छेड़ेंगे नहीं, उसको नहीं छेड़ेंगे, पर उसके बाद आप उसको इन्वोक कर सकते हो. एंड फॉर दिस पार्टीशन मीन्स ओनली वन इफेक्टेड बाय द रजिस्टर्ड डीड और बाय द कोर्ट डिग्री. अब इसमें ना क्या आ रहा है कि विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा में ये क्वेश्चन आया था कि 2004 में क्या फादर एंड डॉटर बोथ हैव टू बी अलाइव. सो एक है सेविंग डिस्पोजिशन दिया हुआ है कि वो 2004 के पहले की जो प्रॉपर्टीज रजिस्टर होगी क्लोज होगी खत्म होगी उसको हम नहीं छेड़ेंगे, पर 2004 में फादर एंड द डॉटर बोथ हैव टू बी अलाइव टू इन्वोक दिस. सो समरी ऑफ द विनीता शर्मा रूलिंग, द राइट कम्स फ्रॉम बर्थ. Amended section 6 makes a daughter a co-partner by birth in her own right and the same manner as a son, whether she was born before or after 9 September 2005, which is the date of the ruling. The father need not have been alive on 9/9/2005, since the right comes from birth and not from inheritance through the father. It does not matter whether the father was living on the commencement date. Only the daughter need to be alive to make the claim on 2005. This overruled Fulavati, which had been required both father and daughter both have to be alive in 2005. Now, this right is retroactive. So, इस context को अगर लेते हुए मैं इन question को पढ़ूं, what has happened? Daughter in 2020, कौन सा 20 की 26 का? 26 realized कि भाई मेरा तो राइट है, आई हैव अ राइट, मैंने तो बहुत सस्ते में छोड़ दिया, मैंने ठीक है आई रिटन क्लोजर है ये कंप्लीटली, बट आफ्टर दिस रूलिंग विच इज ऑफ 2020, दिस रूलिंग इज ऑफ विनीता शर्मा, इसलिए देखिए ऊपर में लिखा है सूट रिलाइंग ऑन विनीता शर्मा. सो उसने पहले कॉम्प्रोमाइज किया, पर विनीता शर्मा के रूलिंग के आने के बाद उसको रियलाइज हो मेरा तो बहुत ज्यादा राइट है, सो मेरा तो इक्वल हिस्सा बनता है, तो उसने फिर जाके क्लेम किया और उसमें फैमिली सेटलमेंट लगा. सो जनरली क्या होता है, आप आज मैं फैमिली सेटलमेंट करके अपने भाई से अलग हो गया, फिर मैंने एक महीने बाद आकर फिर चलो एक और फैमिली सेटलमेंट, ऐसे तो होता नहीं है. यू कैन नॉट डू मल्टीपल राउंड्स ऑफ फैमिली सेटलमेंट, बट हियर देयर इज अ मेरिट. Here there is a merit. It's not a tax question technically. It is actually a tax question, but then you need to know the regular law. तो 2020 में रूलिंग आती है जो बोलते हैं आपके पास राइट है और आपका दिमाग खुलता है और फिर आप जाके बोलते हो मुझे चाहिए वापस, मुझे अब पता चला. तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस चीज को मानेगा कि नहीं मानेगा, यही क्वेश्चन. आंसर क्या बताइए, मैंने बैकग्राउंड दे दिया. इसके अंदर में when we are concerned with the taxation question, so in any case brothers gifting to sister is anyways exempt as gift, whether it is private limited or whether it is property. LLP will come to later, but as far as gift is concerned, gift is anyways exempt. Okay, so I don't think there is any issue. Now the main question here is that the admission, the admission of daughters as LLP partners with capital contribution by the brothers means they are basically inducting the sister in the LLP with the capital contribution by the brothers. Is there a deep gift under 56-10 in LLP's hand? Question 3 है ये ना? हाँ. 3. सबको देख लो. LLP is receiving cash in exchange of the LLP interest. LLP interest is being given to the sister, but the money is being brought in by the brothers. तो आपने बोला भाई मैंने कुछ भी नहीं Any for that property and share in company. No, the cash is coming inside the LLP. LLP is giving its share of interest to the sister. This is 2000. सो कैश कंसिडरेशन हुआ तो एलएलपी तो एग्जाम्प्ट है, कोई उसमें इशू ही नहीं है. सो एलएलपी को कैश मिला, उसने एलएलपी इंटरेस्ट दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी एलएलपी इंटरेस्ट जिसको गया है वो सिस्टर को गया है.
जबकि कैश दिया भाई ने, तो अगर मैं आपका पहले वाला प्रिंसिपल अप्लाई करूँ तो हाँ बोले 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 आज के दिन में the point is that whether it will be deemed as a in the first limit we discussed that it is a capital asset right in LLP. Yes. So whether and when नहीं, the radical brothers, taxation तो हुआ नहीं है। नहीं, but brothers हाँ। are basically relinquishing their right, and then that right itself is going to the system. तो जिस contribution है ना relinquishment तो नहीं है। Contribution of उसका right कम होगा तभी तो मिलेगा. नहीं LLP के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, LLP को कैश मिला उसने इंटरेस्ट दिया, there is no LLP में problem। आज के दिन दो भाई 50-50 थे. सब ठीक है सर, उसमें कोई नॉर्मल है, वही तो LLP में कोई कैश डाला उसको इंटरेस्ट मिला, there is no problem है। बट ये गया है सिस्टर के पास, yes. दिया किसने? इधर ने दिया 56 to 10 कहाँ है? 56 to 10 Right तो to अगर आप वो फर्स्ट वाले में बोल रहे हो ना relative है, रिलेटिव है, हाँ ये भी relative है। वहाँ पे भी रिलेटिव है, सो इसे 56 to 10 क्यों आएगा LLP? सर कुछ बोल रहे हैं, सर कुछ बोल रहे हैं। हाँ जी That's what we are discussing. 10 will not apply. इसमें क्वेश्चन That's what it's saying will not apply. सो एसेट तो है ना सर, जो प्रॉपर्टी को ना बेनिफिशियल इंटरेस्ट Not a conclusive definition. Conclusive definition. अंडर 56 to 10 Yes. दोनों एंगल से नहीं लेते। दोनों एंगल से कुछ नहीं। But that is not an inclusive definition. That is the exclusive definition. fourth question is agricultural land. सर कुछ सोचो। मेरे को ना टू बी ऑनेस्ट क्वेश्चन 1 2 3 मतलब आप इसको अलग तरीके से अगर देखिएगा तो मतलब यू कुड डू बेटर वे गिविंग कैश एंड डूइंग दिस थिंग्स उसमें ये पूरा गिफ्ट देने का डायरेक्ट गिफ्ट मतलब You could have given gift to the गिफ्ट sister to the गिफ्ट तो कर सकते हैं। Last point is agricultural land, assuming it is rural and outside the section 240 definition of capital assets. Capital gain is moving, but Yes, stamp duty it question. is stamp duty payable on the family arrangement deed as a conveyance to the daughters or as a resale release fine. सर एक चीज बताइए मेरे को कि एग्रीकल्चर लैंड जो है राइट, यहाँ तो मुझे पता बंगाल में तो स्टैम्प ड्यूटी लगता है उस पे, अगर रूरल लिखा हुआ है लगता है Stamp duty तो लगता ही है. हाँ, stamp duty सारी land में सब जगह पे stamp duty लगता है. stamp duty लगता है. एग्रीकल्चर लैंड पे गिफ्ट नहीं लगता। Gift पे stamp duty नहीं गिफ्ट तो वैसे आप वैसे देखिए, अगर अभी करेंटली अगर आप गिफ्ट टू रिलेटिव देते हो तो वैसे भी अभी 1000 रुपये हो गया, प्लस 5% रजिस्टर वो भी नहीं है क्या? सेटलमेंट पे नॉट सेटलमेंट पे फैमिली सेटलमेंट की एंट्री नहीं, सेटलमेंट करके अब सेटलमेंट्स के अंदर ही आ जाएगा ना सर, उसका 1% लगता है। हाँ जी बट सेटलमेंट मैंने देखा है कलकत्ता में रजिस्ट्रार लेता है सेटलमेंट में ट्रस्ट नहीं, फैमिली सेटलमेंट में 5% लेते हैं। ट्रस्ट को रजिस्टर्ड करने जाएंगे नहीं नॉट चेरिटेबल ट्रस्ट के साथ वो तो गलत कर रहे हैं पॉसिबिलिटी, बट सेटलमेंट पे ना जैसे प्रैक्टिकली भी है एंड लॉयर से भी मैंने वेट करा, मैं कहता हूँ इन सबसे वहाँ पे सेटलमेंट पे अगर किसी को कंसिडरेशन मिल रहा है एज ए सेटलमेंट तो मतलब सिर्फ ट्रांजैक्शन है उसमें सेटलमेंट में एक जन को ब्रदर कुछ मिल रहा है 1% लगता है उसमें एंड दैट कम्स अंडर सेटलमेंट का क्लॉज 1%।
I don't think so because settlement पे 1% दिया हुआ है and it's a ये इसमें तो ट्रांसफर नहीं नीचे वाला हो गया तो कंक्लूजन है डिसाइड से क्वेश्चन ब्रेक करवा लें इसमें भी कुछ इंसाइट्स सब बैठी ना either take a break of 5-10 minutes and maximum there are so then we close it within half an hour because if we break and everyone agrees on that so maybe 20 minutes half an hour wait for 2-3 minutes the one which will be taking up you so let us so So, on behalf of each one of us, huge round of applause. So, on behalf of State Regional Council, I will take this moment to welcome you at the time of Thank you. end of your deliberation. And thank you, sir, for thorough discussion. I think many of them were asking that the notes from which you are reading, whether they can get that also. So if you can share with them. I will be happy to. Thank you so much. For the information of at least Kolkata people, 3rd and 4th July we are having a restructuring conference and sir is taking a 2-hour session on gift, succession and inheritance at Kolkata 3rd and 4th July. Thank you. Thank you. So, Chairman. We have the privilege of Jagdish sir here, and in the last case study, we would like him also to supplement so after divine the answer we need that. I think everyone agrees. So let him put now. We are calling him also. Will inform that case study को पता नहीं कितना ध्यान चाहिए. Sir is here, he will give us inputs also. No, what that would be great. So case study बोल देते हैं. That would be great. That would be great. I will be sir, please. Sir, I will. Direct start. Direct start. No breaks. So we are starting the 3rd case study. Yes, sir. Just come back. Just come back. Bye. उसमें ऐसा ये तो अच्छा ही हुआ डुप्लीकेशन होता क्या फायदा क्वेश्चन तो नहीं लेकिन हमको क्या अपना
पड़ा हुआ है जितने हैं लोग इसको हैंडल कर चुके हैं brief of the case start. जो पूरा कि तुम जानता है और बेटर है कुछ नहीं पढ़ाई कर लीजिए कर इनके लिए सर किसने बनाया है? तो स्टार्ट करते हैं अगर ये सुनो आधे घंटे में हम इसको कंप्लीट करते हैं तो आपका सवाल है हर समय यहाँ पर हमने बहुत पहले आपकी बात इंट्रोडक्शन brick by brick. Land and utilities capital हो गया वैसे खत्म होने सारा हो गया वो ठीक है एक्सटेंशन मेरा समझा हुआ भी हम बात नहीं करते ये दूसरा चीज है फॉरेक्स वाला थोड़ी है नहीं फॉरेक्स वाला कि लैंड एंड बिल्डिंग कंट्रीब्यूट किया कंट्रीब्यूट कर करके और कलरेबल डिवाइसेस का खुद निकल गया वो बात है सिर्फ स्टैंडर्ड आंसर है वो स्टैंडर्ड आंसर तो सर इसका हो सकता है लेकिन जो सर्कमस्टांस लगा रहे हैं उसमें नहीं होगा असर नहीं होता लेकिन अगर इमीडिएट गैप होता है ना वो, अगर वॉच में आ गया 1 साल के अंदर निकल गया तो फंस सकता है मतलब इसका आर्किटेक्चर का मेन चीज है कि आपको सब्सटेंशियल इसमें लैंड बिल्डिंग दिया और भाग लिया दूसरे को छोड़ के उसमें गैप रखना पड़ेगा अदरवाइज फंस जाएगा तो बहुत मुश्किल हम बताया था तुमको हम लैंड बिल्डिंग का शेयर करके 17 से निकाला है 17 में डाला और अब निकाला शुरू कर लो भाई So, yeah. So, I'm not ready. whatever you just close it in with half an hour. We'll read up extra जो एडिशन आपके एक्सपर्ट Let us start from. एक बार बोल दीजिए बोल रहे हैं बात So we start, and the timeline to end is maximum 30 minutes. And starting timeline to end is 30 minutes because after that we have to leave for the airport. Where are people preparing? सब चाय पीने चले गए. अजीत जी हाँ. So, we will quickly take up yes no type of answers from sir because sir is authority. Correct. So, basically क्या है, this is very kind of prevalent, especially in real estate industries में बहुत होता है इस टाइप का चीज. So ये practical चीजें हैं. I think it will help most of us that basically some individual family members have owned renewable property jointly held in some ratio. They form an LLP, and in that LLP, let's say the property is also held equally, and they form an LLP where the profit sharing ratio is also equal. They introduce their renewable property being land as a capital contribution, record the land in LLP's books at 5 crore rupees, and credit their capital account by 5 crore rupees. Let's say. No, sorry, there's one thing. One of the family members owns this land, others don't own this land. So that family member introduces his 5 crore and credits his capital account at 5 crore. Other 2 family members also contribute 10 lakh contribution and get it at a 1/3 equal sharing. प्रॉफिट शेयरिंग Profit sharing is equal. Now they enter into a JDA with developer to develop a project at a revenue sharing. Now one of the fact is that
a registered conveyance deed is executed. In the book it is written no, but we are assuming registered conveyance deed is executed for transfer of the property by one of the family members to the LLP. Okay, the fair market value, the stamp duty valuation of the property is 32 crores, but he has recorded it at 5 crore rupees. Now, within 3 months, LLP revalues the land at 28 crores, being a fair valuer's report, and enhanced value is credited to all the partners' current account in profit sharing ratio for 3 partners, and then so first we will come to this limb, then we will move forward. So sir, first question is that whether introduction of this immovable property by partner into LLP amounts to transfer under Income Tax Act, and as per 45(3), the consideration is the book value. So whether 50C will apply to that partner who is contributing, because the market value is 32 crore and the book value is 5 crore. Whether 56 to 10 will apply to LLP on the same ground. The risk here is that within the period of 3 months you are valuing it again. So therefore there is a cloud over the answer which otherwise would have been valid, now may not be valid because of the short time frame within which you are revaluing it, and that too the quantum by which you are revaluing it. Because the succession events which are following one after the other will lead to a difficulty. Assuming that we ignore that, on first principles, introduction of a capital, introduction of an asset by a partner into a partnership firm where he is already a partner or he is being made a partner does constitute a transfer. Because what was my exclusive right now becomes my divided right, and that too which I will realize only on the dissolution of the firm. That's settled position. Supreme Court in Sunil Siddharth Bhai, where also the quick succession etc. is there in the last paragraph of Sunil Siddharth Bhai, that we are assuming that the partnership is genuine and it is not a pass-through. So it was then in 80s that Supreme Court visualized that such a thing is likely. Now Supreme Court then goes to examine that yes, this is a transfer, fine, but what is the consideration? The consideration is share of profit in the partnership firm, because that time LLP was not there when Supreme Court pronounced it, and share in the interest of the share in the net assets of the firm on dissolution. Supreme Court said both of them are not known today. Therefore, while this is a transfer, consideration lies in the womb of the future, and therefore computation mechanism fails. This is what Supreme Court held. Legislature did not like the decision. Therefore, they amended the law, and 45(3) came because of this decision. So 45(3) came and 45(4) also came. In the same finance bill, both were introduced, 45(3) as well as 45(4). Now, if you notice, 45(3) is admission and 45(4) is dissolution. 45(4) uses fair market value as a measure, but 45(3) consciously uses book value. Therefore, it was always the intention of the legislature that when you introduce an asset into a partnership firm, book value is acceptable to us because we are going to do business with this. Right? Now the question is, does this thinking of the legislature get amended with the introduction of 50C? Right? There, if at all some officer says, you already have a Mumbai tribunal decision, and also I believe Calcutta tribunal following the Mumbai tribunal. I don't remember the name. There was originally a Allahabad High Tribunal decision which travelled, Lucknow tribunal which travelled to the Allahabad High Court. Allahabad High Court set aside that order which said that 50C will apply, but which was an obiter in that order. It was not necessary because that document was not registered.
And at that time, 50C anticipated registered. So if document is not registered, 50C does not apply. Tribunal should have stopped there. It should not have gone ahead. But tribunal went ahead and gave a finding, which is what created problems. But after that, that decision was overturned by the Allahabad High Court. Carter Notice. That is Carter Notice, Lucknow Tribunal. Lucknow bench of the tribunal followed by Allahabad High Court. Then you have Bombay Tribunal, subsequently Amar Tara or something, which is then followed by Calcutta Tribunal, and now there are other decisions. The rationale of all those decisions is that there cannot be a fiction over a fiction. 45(3) is one fiction, 50C is another fiction. Moon Mills, Supreme Court says you cannot have a fiction on fiction. That's the rationale. But I think one does not need to go there. Sunil Siddharth Bhai is good enough an answer for it. That's a 56 to 10 similar analogy for the LLP side. In the recipient LLP is receiving a property valued at 32 crore and 5 crore rupees crediting to that partner. Again, consideration is not determined. When LLP is receiving the property, what is the consideration? Right in the LLP's profit. Yeah. And right in the net assets of the LLP. Both of which are uncertain. There is no mechanism to compute. 50D? 50D I cannot read for 56 to 10. When I am looking at 56 to 10, I must have a consideration and I must compare it. Sunil Siddharth Bhai says there is no consideration. Consideration is in the womb of the future. Therefore, the mechanism of 56 to 10 fails. Possibly, in theory, it may apply, but practically, there is no solution to that. And also, if one leg is out, the other leg also has to have the same similar consideration on both sides. Yeah. So, any other view? Sorry? Not applicable. That is because of fiction on fiction. Where one fiction is there in 45(3), book value. The ITAT case you said, that is in Calcutta also. That Sheila said 2018, there is a case of Sheila said 2018 9 TMI 1809, which says that it does not. But following Amar Tara. Amar Tara, yeah. Following Amar Tara, and then there are other also. Correct. The lead case was Amar Tara, which for the first time took that position. So now, next is that for 1.4 we are not taking because stamp duty is already, we are assuming that it is registered. No, it is mandatory. Because you have to, it is mandatory. Otherwise, there is no transfer. There was a question whether it is required, so stamp duty is mandatory. Now, see, that doubt could have arisen if it was a partnership firm. Because a firm is not a person. right. Therefore, there was some debate going on at one point in time that when a partner introduces into a firm, how does he introduce it? Because the document cannot be in the name of a firm, because firm is not a person in law. Right. Therefore, it cannot own property. So one follow-up question on this, sir, although I think may not be much relevant, but when a partner introduces at a value in the firm, then whether 194 IA applies, the TDS on transfer of immovable property, Okay. it should not apply because 194 IA says any person responsible for paying any consideration. So here consideration is there, but we are not paying, so we can take that thing and no TDS could apply then. It is risky. It is risky because once you credit my amount in 5 crores, whether to retain in the LLP or to withdraw is my choice. Unless you have a condition that you will not withdraw this 5 crores. So responsible for paying me, then it is then TDS can be Possible. 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 This is a Possible. It's not a clean answer. Because all the ingredients of 194 IA are satisfied. There is a transfer. Unless you again go back to Sunil Siddharth Bhai and say consideration is not determined. This is a notional. But then deduct it on book value. whatever is the consideration. 5 crores. 5 crores. Deduct it on that. Sorry? हाँ so 5 करोड़ पे काट लो. अभी डिफिकल्टी कहाँ आएगी कि 194 IA में बोला greater of the two. Yes, that is the point. And that will take it to 26 years का income दिखाएगा 32 crore.
हाँ, but वो तो करना पड़ेगा. I mean, either go through that or you say stamp duty does not apply because of नहीं 50C does not. 50C नहीं, but 190 को Stamp duty value बोलता है, लेकिन वो क्यों बोलता है? Go to the object of that. Go to the object. The object is he wants to compare 50C. You have to print it. But we cannot clearly say कि 190 को will not apply. 194IA will apply. I'm saying. Will apply. No, LLP deducts. Not LLP. Because LLP is acquiring the property. 190 तो LLP के ऊपर आएगा ना. नहीं. हाँ. For the memo LLP. Is it acquisition? Any इसमें लिखता है any person responsible, any person being a transferee. तो transferee तो हो ही गया. Transfer तो है ही ना, 45 transfer तो है ही. ट्रांसफर तो विदाउट 45 भी बोला था. Any person being a transferee responsible for paying to a resident transferor. I think this is the language. So this will apply then also. कैपिटल गेन होगा 5 minus 1.2. तो आप 1.2 में भी रिकॉर्ड कर सकते हो. Yes, there will be capital gain. 32 crore. That is the thing what चलो. Next picture. If we are not dealing with 45.4, we have already discussed this matter. We are taking the next 1.6. We have already discussed previously. 1.5. In previous 7. 1.5 we are discussing. Are there any implications of revaluing land from 5 crore to 35 crore after introduction? It colors your original transaction. That car thing could come into effect. This will trigger that. This will trigger. So valuation is not recommended. Revaluation. Revaluation is not. Okay, 1.6 we are not taking up. You can adjust this in your commercials. See, in LLP, you have a flexible mechanism. Yeah. You say to determine the share of profit of the other person, the value of land will be taken at 35 crores. That directly you are not accounting for it. I am giving him a lesser share. That's it. Yeah, they can record it 5 crore because 45.3 allows you to record such a book value. Whatever you record, that will be deemed consideration. Yes, right. Yes. Right. Yes, right. Right. Now, 1.7. the next part was that being a JDA, now they are into revenue sharing and they are receiving revenue share as and when the buyers are making payment in the escrow account. The LLP is receiving its share of revenue for the land being contributed in the JDA, basically giving the development rights to the developer. So, what will be the point of taxation of that share of revenue which is being received by the LLP, although the LLP will be executing the conveyance deeds of the land after completion of the project, after obtaining the completion certificate. So till that time, Is this capital asset or stock in trade? capital assets. We have recorded as a capital asset. In the LLP? In the Why? LLP. Why? In the What do LLP. you get? What do you achieve? The 12.5% Yeah. benefit. 12.5% LTCG benefit. What is the business of the LLP then? Business is just not this owning the land. Huh? Owning the land. Business is trading in general goods. Somebody brings, you enter into a DA immediately, and you say, this is not my business. Then what is your business? What will your object clause say? Object clause will be, of course, be having real estate as one of the things. Then that means you are entering into a different zone. Yeah. Assuming it is capital gain. Assuming capital gain, I don't think anybody will go through with this. Then the question is, if it is capital gain, it is taxable in the year of transfer. Now, what is the year of transfer? The
explanatory memorandum to the finance bill of 2016 or 17, which introduced 45(5)(a), says that when you sign a DA and give possession, taxes become. That's the legislature's understanding, and therefore we are bringing 45(5). Rightly, wrongly, they're bringing 45(5)(a) only for individual and executive, right? Therefore, for others, that consequence follows. Okay. Now, at least for Calcutta, you have a Calcutta High Court decision which says that a development agreement, there it was area sharing. Here it is revenue sharing. Therefore, much stronger footing. Better than that. Better than? Better than what was before that. Because I don't know what that only means. Then at least I know कि इतना फुट आएगा, यहाँ तो कितना पैसा आएगा, कब आएगा, कुछ पता नहीं है. Therefore, taxation will happen only after that. Till that time, the money will be as an advance against the capital asset. Now, sir, if this amount which is being received is transferred to the partners, okay. The amount is being transferred to the partners by way of advance share of profit. Because the share of profit to partners will accrue only after conveyance. Okay. Amount is received from the. So it is a debit balance in capital debit account. balance in current account. Capital account. Okay. Capital account. So it will be continuing. This debit balance will increase till 5-6 years. Correct. So no issues in that. There is no issue in that. So point 1.8, is there any implication on the partners withdrawing fund in excess of capital balance during the period till completion of the project? It is just a normal debit balance of current account. GAR provisions. What are the safeguards to litigate, avoid GAR implication in this? One of the points I said was that don't revalue it. Anything else which as a preventive measure? Why did you introduce? The purpose. Why did you form an LLP and bring it in? This is very important. The purpose. That it is out of a need, not voluntary. Correct. So obtain a report or tell the developer to make it a precondition that tomorrow if you die, then there will be succession issues and my project will be in a limbo. Right? Therefore, bring it into an entity which has perpetual succession, and you had two choices, company versus LLP. You chose LLP because of flexibility. So that will answer possibly GAR. This is a very important point which Saran made, that the purpose of this introduction should be documented and should be substantive enough. That this is not just out of my voluntary thing I have just done, and there should be a need. Take a bank financer's opinion or a rejection that as an individual I will not give you a loan. So project loan will not be sanctioned. The developer says that tomorrow if you die, there will be succession issues and my project will be in a limbo. So all these are commercial reasons which forced me to have an LLP. Which I said at the beginning only. I don't know whether capital gain तो बहुत risky है. Because आप एक entity बना रहे हो, उसमें land लेके आ रहे हो, फिर capital gain तो नहीं. Had it been an individual files, then there were different issues. The individual who has inherited or who is holding land since years, if he does it, then it will pass through. Yeah. Undoubtedly, it will pass through as capital gain. So you have to take a call. 12.5 versus 32 or whatever. So we had also one last question where initially we had mentioned that what happens if the land is, land is leasehold and not freehold. And then what will be the GST implications on this? So GST implications The GST implication from which perspective? From perspective of this developer perspective only. Then 2019 circular will apply. Basically now the developer will have to pay RCM under RCM development rights. If it is a residential project, it is exempt with the
flat sold before CC, and otherwise it is payable on CC, and Domain. the developer will pay RCM on the development rights. If there are in respect of unsold flats on the date of OC. Yeah, but there is one more thing. If the land is leasehold, then although the GST law says that sale of land is outside the purview of Schedule 3, and this Sale of LLP will be then assigning the leasehold right to the developer, then whether GST will be applicable or not, although it is akin to a transfer because stamp duty is being levied on any property which is having a leasehold right above 30 years. But still, in legal terminology, it is not a sale. It is called assignment of leasehold rights. Then it is not assignment, it is grant. If it is assignment, going back Gujarat High Court and now Bombay High Court, Grant of. it is grant. Grant of. It is not assignment. Grant of leasehold rights. So there is a sub-grant. There is a sub-grant because he will further lease it down. So there will be a sublease unless he says I'm getting out. If he gets out, then the Gujarat High Court will apply. Otherwise, Gujarat High Court will not apply. So this is done. I think the last question was, I think it is very subjective. As an auditor, would you qualify or put observations any in the audit report of the LLP? Because if you are auditing such a situation, then whether you would put any If there is no revaluation, then I don't see any fear to the auditor. Then definitely, then I mean you don't have to think. You have this note also, which sir has suggested commercial so that reason. is for the parties. That is But that yeah, becomes management will give you a representation. So that becomes a commercial reason for you. Yeah, basis behind which. Right. So we thank All the participants. and thank you to the speaker and also Anand for his deliberation of this term. Ayurji, please conclude the session for today. Our chairman, young and dynamic. Kothari. So friends, since 2 days things are going on, we have not mentioned anything about the drafters of the bill. I take this moment to compliment and thank all the members who have helped us to draft these case studies. Because without it, that was the actual base on which the entire 3 days going on. So please give a huge round of applause. Kothari ji has done, Vikas ji has done, drafted one, and many others. There were 8 case studies have been there. So, these 3 are present currently. So, all others, kudos to them, they have taken out time and helped us in drafting all these case studies so that we can have it. Thanks to Jagdish sir and Aditya sir for helping us out and taking us patiently through all the case studies till now. Thank you. Thank you so much. We are grateful to Great. For 9:30, but many of the members so I'm considering that we will start at 9. That is okay. We will start maybe initially we'll do the initial registration of all the delegates and we will straight away start the program at 9. क्या बोलती है सुबह 9:30 बजे आपको यहाँ पे 9 बजे तो 5:30 6:30 ओके भाई तो मेरा तो मैं तो आज के एग्जैक्ट टाइम पर आ गया नहीं 8:30 को टारगेट में सामान सर बहुत बढ़िया आपके साथ
बहुत चांगली